Good morning, Sunita ma'am. Good morning, Amarjit ji. Good morning, madam. How are you? Good morning. Good morning. Fine. Okay, we are just going live in 2-3 minutes. Then we will start with the session. Yeah. Okay? Just 2 or 3 minutes we are going live. So we have with us Anil ji. He is CEO of MEPSC, that is a Sector Skill Council on managerial, and entrepreneurship courses. So, sir is with us. Sir, Morning, we sir. have Sunita ma'am. She is Namaste. assistant professor in Mirabai Polytechnic, and Amarjit ji, she is a PGT Shorthand Hindi. So, these two are going to be our resource persons for next 2 days. I just want a confirmation if we are gone live. Just let me check. Shorthand Hindi. So, all right, now we are live. So, I think we can start with the session. All right. So, very good morning. I'm Dr. Swati Gupta. I'm Deputy Secretary, Skill Unit CBSC, and I welcome all my experts today and all the participants who are viewing us on YouTube. This is indeed an honor to offer training in two courses today, that is Shorthand Hindi and Office Procedures and Practices. For next 2 days, we are going to be having a teacher's training on these two courses. These are one of the oldest courses that CBSE has been offering, and it has a huge, market value as well. To understand more about the market scenario and the future prospects of these courses, today we have with us Colonel Anil Kumar Pokhriyal. A little about brief about Sir. Colonel Pokhriyal is a CEO of MEPSC, that is Management and Entrepreneurship and Professional Skill Council. He has a diverse professional experience of more than 3 decades across two continents in the fields of project management, operation management, including SCM, business development, procurement, UN peacekeeping operations, and skill development, while working in challenging environments of corporate sector in United Nations and Indian Army. He blended successfully in the corporate sector, working towards skill development in construction industry after serving in army for more than 3 decades, having been commissioned as in the Corps of Engineers in June 1991. Prior to joining MEPSC, he was the first head operations of the Construction Skill Development Council for 2 years. He was responsible for assessment and certification of workers in construction industry. Colonel Pokhriyal was instrumental in setting up construction SSC and laying down initial foundations while interacting with multiple stakeholders, including key officials from central and state governments, NSDC, NSDA, erstwhile DGENT, large industry bodies, and so on. He successfully led MEPSC to be awarded and recognized by Golden Peacock National Training Award 2021 and the two prestigious Scotch Awards, Silver Award and Order of Merit, India's largest Indian independent awards. Consequently, for 2 years, 2021 and 2020, for skill development projects. Colonel Pokhriyal is also a recipient of Skill Leadership Award 2020 Gold category in the skill ecosystem by Foresight Society of New Delhi. A National Merit Scholarship recipient, he graduated from Delhi University in 1989 and obtained his BTech Civil degree from College of Military Engineering, Pune, 1998. He did his Masters from Defense and Strategic Studies from Madras University in 2003. It is indeed an illustrious career, Mr. Colonel Pokhriyal, and we are so glad to have you with us today. And now I will invite you to please say a few words. Thank you. Thank you, Dr. Swati. Am I audible? Okay. Thank you. Thank you, Dr. Swati and CBSC for inviting us and giving me this opportunity to interact with the experts from industry, that is Miss Sunita and Mr. Amarjit or Miss Amarjit. I really don't know. Sorry.
It's really an honor to be here talking about a subject which is so very important for the youth of our country, because it is actually the backbone of any corporate or any office organization. What we are trying to do here is today talk about the what is actually office management and secretarial practices. Like Sunita Madam is there and Amarjeet is here, so they know the kind of courses and the kind of skill sets which we are trying to imbibe amongst the youth for a career at the starting level. And what is more important is to understand the nuances and the expectations of the corporate and the career of the persons who will be taking up these kind of jobs. So as we know, what is office administration and what is the office management. These are actually the knowledge, the skills, the procedures and methods which needs to be performed by a private secretary or an office assistant. These includes the reception skills, the computer applications, the bookkeeping, the payroll, time management, human resources, and all kind of planning, organizing, controlling, and staffing kind of jobs which are expected from a private assistant, private secretary, or office assistant, or a secretary. What it does is actually the practice which is for the administrative vocational trade. In an organization at the lowest level or the entry level, these are the people who maintain a very close relationship between the different departments of the and people. And they even take care of the order office orders, the supplies which is there, and give instructions to different people, different departments, and different staff officers in an organization. And they are the bridge between the senior management and the other staff, and convey the orders, and do the coordination work in a very very organized manner. So that is what is generally the role, and what is meant by the office management, and what is the role of this these important staff members in any organization. When we talk of a stenography, and especially Hindi, because in the northern states and many states in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal, even in Haryana, Delhi, Hindi is taken up in a big way, and especially in the government departments, many of the universities, school, colleges, and also at the district court levels. Many of the files and everything is written in Hindi, and so when we say stenographer Hindi, the person should be able to take the dictation in the shorthand and reproduce it, either on a computer or on a typewriter. Still there are people who are doing it in typewriter in far flung areas, in remote districts, especially in the court and the lower tehsil level, where these kind of people who are doing the clerical jobs and duties to assist the superiors and the senior staff. So they are supposed to take the dictation in Hindi, write it in a fast manner, and then try and do it in a manner so that they are able to do it very efficiently and very effectively without losing the crux and the important message. These are the people who are there as part of any of the administrative departments. They are part of the management teams, or maybe even with the senior management professionals like the CEOs, the CXOs, the CFOs, the head HR, and all. So what they actually do is, they maintain the correspondence, from the clients or to different departments. They manage the office procedures, and also schedule the departmental meetings or outside meetings, or even the travel plans. So that is what is the basic functions which everybody knows. But then what is more important is to know, what are the career options, and what are the job prospects, and whether it is marketable or not. So indeed, it is one of the most marketable course, and it is very much very high in demand in the industry.
though it is an entry level job, but then it is very important for a student or a young youth to equip with the practical skills which can be applied in the business world at the entry level. That is what is very very important, is the person should be able to uh, do the planning for the organization, do the staffing and the controlling and coordination. Basically it is the coordination work which is supposed to be done. And generally we interchange these words, which is actually not very correct, that when we say there is a personal assistant and there is a secretary, and whether all secretaries know the shorthand, that may or may not be true. But then secretary is a person who's actually who's working in the office, and which is for the entire office or the department, and he or she may be working for one or many people. But personal assistant is actually a person who's doing the all the personal work also of that person, let's say of a CEO or a CXO or a COO or a CFO, and the generally the senior most level in the hierarchy of the company. And he or she does the personal works also and does much more work than a secretary. Secretary is generally which is there for the official work. And the skill sets, what is required for personal assistant or even for a secretary, is to have a very very strong communication skill. They should have the compassion. They should be very very empathetic to the cause and the job at hand, and they should be very very focused and diligent. Like they have to go to the details and plan a given task end to end. They should be able to solve the problems and work well under pressure, so that if let's say a person is going from place A to place B, so you have to start doing the local travel to the airport, do the air booking, then get down at the destination station, do the again the local transport, go to the hotel, attend the meeting. So all those kind of local coordination work, this person. So those kind of skill set, the person has to go into detail and do that kind of a planning, the micromanagement, and that is what is very very highly rewarding job. And when we say that if a person is able to manage such kind of requirements of a senior functionary of a company, then indeed the demand and even the pay and the salary and the wages is pretty high. Maybe at the entry level, with less or zero experience, the salary or the wage will be slightly modest. It may still be more than 10,000 to 15,000 rupees, but the same person when goes to the higher level, in the government of India level, the secretary rank officers, the highest bureaucrat in the government hierarchy, generally has a PPS, that is the personal private secretary, and generally the additional secretary and below have generally the private secretaries. So the PPS is a gazetted officer of a rank and the pay wages, which is more than a lakh. That is, I'm saying only in the government department. Similar thing if comes out in the corporate, and with the very strong skill sets what we just spoke of, the person will definitely be earning in lakhs. So this is a very very paying job. You are very close to the senior management and in the organization. You hold a very very important portfolio, and you are respected quite a lot. So this is what I wanted to just tell. And what is also important is that these people have to be now up to date with the latest tools which are available uh, to do the scheduling work. Use the apps and the technology, leverage the technology and the tools which are available to do the calendars, the project management. Note taking also can be done. Even the chat messaging, email, the way the emails are sent, the mail merge, and if you have to maintain a database, how do you do it? So all those things become very very important, and a person, if is he or she is updated with the technological advancement which are there, he or she will become a very very useful resource for the entire organization,
And that is exactly the point that we have to inculcate, amongst these youth, and we must apprise them that these are the kind of skill set, and these are the kind of job environment you will be, and these are the job prospects, including the job aspiration and the level of progressions which are available once you join the service and you go on to the higher levels. In fact, there are many examples, like Rusi Modi was the executive assistant to the Tata chairman when he joined, and he himself rose to the position of the chairman. So there are innumerable examples wherein the PA or the private secretary or the executives have risen to that kind of a level because they have been so close, and they see the management at the top level and the kind of macro management which they have to do. The senior functionaries or the top executives in a company do. So those are the job aspirations. At the highest level, the person starting at a lower level can reach to that level. So this is the kind of the job prospects and the growth prospects which are there, which we should be able to tell them. So anything more, if you any of you may have to say, then probably we may take it on. Thank you so much, sir, Colonel Pokhriyan, and for your words. And absolutely have, cut through the sector vertically and horizontally, and you have explained all the levels so well. And of course, it's a good paying job, and it is a job with people with higher aspirations will definitely look forward to. And very well respected also, ma'am. It is very well Yes, respected. Everybody knows the importance of a PA or an executive or a executive yes, assistant. So yes. nobody Yeah, rightly said, sir. Rightly said, sir. nobody takes a panga with the executive, and nobody annoys them, and they treat them with respect. So it's a very respectful job in a very very safe and closed environment. You don't have to go out in the sun and all. You have to stay in an office environment in an AC, with telephone and everything all around you. So But it is all about micromanagement. So, uh, how well you learn your stuff when you are in school or in your colleges, and how well you accumulate your life experiences into managing your office and life home work also. So, that also adds to your, you know, adds to your profile, and you become, get higher positions in your management also. So, now I'll move on to my next expert ma'am is Sunita Chok. Ma'am, she is assistant professor in Mirabai campus of Delhi Skill and Entrepreneurship University and teaching to the students of Modern Office Practice Department. Earlier to this institute, she worked as a training officer in and National Vocational Training Institute, Noida. She is MPhil Management, MCOM, BA, and Diploma in Sectorial Practices. She has developed course material for various institutions, including CBSE, NIOS, and IGNU in area of secretarial practice and management. Along with this, she has conducted a number of audio and video programs for NIOS in the same sector. So, ma'am has been teaching this course for decades now. She knows how important this course is and how it should be taught. So, ma'am, I would like to ask you about again the same question: what is the future of this course, and how do you relate it with the job market? Sunita, ma'am, please come online. ma'am, Yes, ma'am, sir. just a minute. I had a meeting, so if you can Yeah, excuse sure, me. sure. Please. Thank you all Okay, again. okay. Thank you, sir. For Thank you, and sir. wishing you all the very best. Yeah, Thank thank you you. so much. Thank Thank you. you, Karan Thank Pokriya. Thank you you. so much. Thank you. Thank you very much. Sunita, ma'am, please come Yeah, online. thank you, CBSE, for inviting me as an expert for your this program workshop, teachers training workshop. Actually, the sir Anil sir has rightly said that this particular course requires many skill sets. Like one is supposed to have organizational skills, communication skills, and one should be very well conversant with various office procedures and practices. And particularly as we are going to have very soon workshop on stenography, all the basic rules of stenography are very important, because at many a times the executive is busy and they have to give dictations very fast. So one should be very well aware of the rules of stenography and how to take dictation in speed,
And in addition to that, how to write good official letters, business letters, and how to operate different type of machines. As sir was saying, many times they have to make travel arrangements, how to prepare an itinerary. So it requires you diverse set of skills. So all the students who would be who have taken this course must ensure that there is one has to have, there is no tolerance of even in a point of error. One has to be 100% accurate in writing all types of notes and doing the work in the office very thoroughly and accurately. So I think we can start with the workshop, ma'am. Yeah, sure, ma'am. Sure, definitely. Thank you so much, ma'am. You have added to whatever Colonel Pokhriyal had just added that this is a highly competitive space. So now I would like to welcome our third expert, Madam Amarjeet Kaur. She is also going to be taking the session on shorthand Hindi after the inaugural session gets over. So a little brief about ma'am. Ma'am Amarjeet Kaur is PGT vocational and she has done her MA, BA, diploma in secretarial practices in Hindi. She has experience of over 29 years and she is an expert stenography Hindi. She has also been part of CBSE trainings and CBSE content making. So now I will call Amarjeet ma'am to please come online and say a few words. मैडम गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मैडम मैं अमरजीत कौर हूँ। मैडम लास्ट 29 ईयर से हिंदी स्टेनोग्राफी मीराबाई पॉलिटेक्निक सर्वोदय स्कूल आरकेपुरम सेक्टर 2 में पढ़ा रही हूँ। मैडम इन बच्चों को स्टेनोग्राफी हिंदी करने से सभी बैंकों में, एसएससी बोर्ड में, लोकसभा राज्यसभा में जॉब मैडम मिल जाती है। इसके लिए स्पीड का होना और नियम फॉलो करना बहुत जरूरी होता है मैडम हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी आनी चाहिए मैडम। सही कहा आपने अमरजीत मैम, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें उसी में ही बातचीत करनी भी चाहिए और आनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स मैम। और एक बार फिर मैं अपने सारे एक्सपर्ट्स का वेलकम करती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। पर ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो टीचर्स टीच कर रही हैं या तो शॉर्ट एंड हिंदी या ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, उनको असेसमेंट जो होगा वो उनको उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मिलेगा जिसको उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर दी ट्रेनिंग के लिए डाला था। तो मतलब आपने जो हमें ईमेल बताया था, हम उसी में आपके असेसमेंट्स भेजेंगे और आपको वो असेसमेंट्स करने हैं। अटेंडेंस लिंक शैल बी फ्लोटेड ड्यूरिंग, अटेंडेंस लिंक को हम लोग सेशन के बीच में डालेंगे। तो कृपया ये ध्यान रखें कि ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए अलग अटेंडेंस है, शॉर्ट हैंड हिंदी के लिए अलग है। आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ऑफिस प्रोसीजर के लोग शॉर्ट हैंड भरते हैं और शॉर्ट हैंड के लोग ऑफिस प्रोसीजर्स, क्योंकि आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे ही आपको असेसमेंट्स भी भेजे जाएंगे। तो आपके दो चेक्स होंगे, एक आपने जो अगर रजिस्टर किया है वो वाली ईमेल आईडी चेक की जाएगी और दूसरा आपने जो अटेंडेंस भरी है उनको असेसमेंट्स भेजा जाएगा। तो 2 लेवल्स ऑफ चेक है। तीसरा लेवल ये है कि आपको ये टीचर होना पड़ेगा, आपको ये पढ़ाना होगा एज अ टीचर ये सब्जेक्ट अपने स्कूल में, तभी आप असेसमेंट्स भर सकते हैं। तो तीसरा चेक वो होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि सुबह का जो वक्त है जो कि 10 से 12:30 तक का है, वो शॉर्ट हैंड हिंदी का है और उसके बाद 12:30 के बाद ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस होंगे। और जब पूरे सेशंस खत्म हो जाएंगे 2:30 बजे के करीब, फिर आपको हम लोग असेसमेंट लिंक भेजेंगे। उससे पहले असेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अपनी ईमेल आईडीज प्लीज चेक करते रहिए 2 बजे 2:15 के बाद से, ताकि आप असेसमेंट्स को मिस ना करें और उसे टाइमली पूरा करके भेज दीजिए। यस मैम। ओके मैम, आपका फीस कर गया। Attend the assessment very rightly, ma'am. Because assessment would be only from the lecture, so they need to be present all the time. They shouldn't leave in between. यस, यू हैव टू बी प्रेजेंट। तभी हमने असेसमेंट रखा है ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपने किस चीज के ऊपर असेसमेंट करना है। क्योंकि अगर आप बीच में चले जाएंगे तो आपके लेक्चर्स में ही आपको पढ़ाया जाएगा जिसपे आपका असेसमेंट है, तो आप असेसमेंट मिस कर देंगे। आपके
मार्क्स अगर 60% नहीं आए असेसमेंट में तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपने अटेंडेंस डाल दी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस बार आपका असेसमेंट आपकी लर्निंग के ऊपर है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे और असेसमेंट्स को ऑनेस्टली करेंगे। एक चीज और एक्सपर्ट्स के लिए मैम, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे हैं तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग यूट्यूब की चैट बॉक्स पे पेस्ट करेंगे अपने में जो भी प्रॉब्लम्स है और मैं उसको आपको बताऊंगी। तो अपने लेक्चर्स में 5 या 10 मिनट बाद 2 मिनट का ब्रेक दीजिए ताकि मैं आपको यूट्यूब के चैट बॉक्सेस में से पढ़ के बता दूं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे तो 20-30 मिनट सेकेंड्स वेट कीजिए, क्योंकि एक लैग होता है जी मीट में और यूट्यूब में एक लैग है। तो आप अभी कुछ पूछेंगे तो वो मेरे ख्याल से 25 से 30 सेकंड बाद वहां आएगा, तो वो भी हमें इनको भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो आप इस तरीके से स्लोली वी नीड टू गो फॉरवर्ड। At present, ma'am, approximately how many participants are there who have already registered? मैम रजिस्ट्रेशन तो 600 प्लस है, तो Okay. उसके अभी आप जो होगा we'll let you know during the day. ठीक है। So with this I again thank you all my experts and participants and I welcome you all for this training session. अब अगले 2 दिन हमें बैठ के पढ़ाई करनी है और अपने असेसमेंट्स करने हैं। So with this I welcome अमरजीत मैम, अब आप आइए and you please take up the session. Thank you Sunita ma'am, we'll meet you at 12:30. Thank you, Dr. Swati. Thank you so much. हेलो। अमरजीत मैम आ जाइए, you can present your screen. हाँ जी, मैं हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ बोर्ड ने मुझे अपॉइंट किया है। आज का हमारा चैप्टर है डबलिंग का नियम और हामिंग का नियम। हिंदी आशुलिपि में ये नियम करने से पूरी शोरेंट कंप्लीट हो जाती है। ये डबलिंग का नियम और हामिंग के नियम। हामिंग का नियम क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो जाता है। अर्धकरण या आधा करके लिखना। किसी रेखा की लंबाई को आधा करने से उसमें ट, ठ और ता और दा का योग हो जाता है, उसे डबलिंग का नियम कहते हैं। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी नियम करेंगे, इसमें 2 नियम पर आज हमने फोकस करना है, डबलिंग और हामिंग का नियम। डबलिंग का नियम होता है जिसमें तरतार, दरदार और करकार। मैम अमरजीत मैम जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंट कर रही है तो वो भी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। हेलो। हाँ हाँ मैम ठीक, आपकी वीडियो आ गई है, और अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंट करेंगे तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो भी दिख नहीं रही है, तो आप एक बार वो भी देख लीजिए। भाई हम जी वो नहीं कर रहे मैडम, हम सीधा ही बता रहे हैं इन्हें। ठीक है ठीक है। हाँ जी, आज हम डबलिंग का नियम करेंगे। हिंदी आशुलिपि में डबलिंग का नियम, किसी रेखा को डबल कर देना ही डबलिंग का नियम कहलाता है, जिसमें तरतार, दरदार और करकार का योग होता है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है, डबलिंग के नियम को दुगना करना या रेखा को डबल कर देना भी डबलिंग का नियम होता है। इसमें ये रेखाएं करकार, दरदार और करकार का योग होता है। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है, अगर आप वीडियो दिखा रहे हैं तो वीडियो नहीं आ रही है। ये देखिए बेटा, हमने जैसे करकार, दरदार और करकार का योग आपका हाँ अब आ रहा है मैम, अब दिख रहा है, थैंक यू। इसे डबलिंग के नियम पर लागू किया जाता है। और तरतार, तर और तार, जब भी हम डबलिंग का नियम करते हैं तो उसमें करकार, दरदार और तरतार का योग होता है। इस रेखा को डबल कर देने से ही इसे डबलिंग का नियम कहते हैं। ये तीनों रेखाएं आपको याद करनी ही करनी है। इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाता है। जैसे अब आपने रफ्तार लिखना है तो आपने रा तो बनाया और फा रेखा को डबल कर देना,
ये देखिए, तर नहीं बनाना, इससे पहले आने वाली ही रेखा को डबल कर दिया जाता है। रफ्तार, इस तरह ही कई तरह की आउटलाइन इसमें बनाई जाती है। जब डबलिंग का नियम, आप जैसे सुंदर बनाना है, सुंदर, आपने सा का सर्कल और ना रेखा, ये दर से पहले आने वाली रेखा ना रेखा को डबल कर दिया जाता है, उसे डबलिंग का नियम कहते हैं। इसे में किसी रेखा को डबल कर देना ही डबलिंग का नियम है। इसमें ये याद रख लेना है, करकार, दरदार और तरतार के आने पर डबलिंग का नियम लागू होता है। अब ये पूछा जाता है कि सरल व्यंजन रेखाओं को तब ये दुगना किया जाता है जब उस रेखा से पहले वृत्त या व्यंजन रेखा लगी हो। आप जैसे सचित्र बनाना है, अब त्रा किससे बनता है? ता प्लस रा से मिलकर बनता है। सा रेखा नहीं बनेगी, इसकी जगह छोटा वृत्त बनेगा, क्योंकि सा वृत्त रेखा के शुरू में, मध्य में और अंत में आता है। इसलिए सचित्र बनाना है तो ये इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि डबलिंग के नियम में किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये छियों के छियों वर्ड याद करने हैं, करकार, दरदार और तरदार। ये रेखाएं नहीं बनेंगी, इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाएगा। अब जैसे आपने पात्र बनाया, पात्र, पा उत्तरा, ये आपने बनाया, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि उस रेखा को आपने डबल कर देना है। अब आपने जब भी इस नियम की ओर ध्यान देना है तो आपने इसमें देखना है कि जब माँ पा का अर्थ है माँ, आधा माँ और पा, इसमें माँ रेखा बनती है। जैसे आपने संग्रह या संप्रदाय लिखना है, संप्रदाय, तो आपने क्या करना है, सा रेखा माँ और पा, इसमें इस रेखा को आपने डबल करके बताना है। इसी तरह ही अंबर शब्द आ जाता है, अंबर, इसमें भी आपने माँ और रा हुक शुरू में लगाया जाता है और ना हुक अंत में लगता है। ये नियम तो आपको पता ही होंगे, लेकिन इस चीज में आपने ध्यान देना है। जैसे लंबरदार है, ला ये है और माँ और अंबर ये है, लंबरदार। इन चीजों को आपने ध्यान देना है कि जब भी डबलिंग का नियम आना है, किसी भी रेखा को आपने डबल कर देना है, तब जाकर आपकी ये रेखाएं या नियम स्पष्ट होगा। अब जैसे अंगर आ जाए, आ ऊपर बिंदी और गा और रा, अब हम ये सोचते हैं कि इसमें कौन सी रेखा बनेगी, इसमें ना रेखा को डबल किया जाता है। जैसे लंगर आ गया, लंगर, अब आप गा नहीं बनाएंगे, ला और ना रेखा है, ना रेखा को डबल कर देंगे। इसी तरह ही आपने ध्यान देना है कि जैसे चंद्र आया है, चंद्र, अब दर है, दर, दर तो हमें बनाना नहीं, इससे पहले आने वाली रेखा ना है, ना के लिए हम हुक का इस्तेमाल करेंगे जो रेखा के अंत में बनाया जाता है। अब जैसे केंद्र है, आपने का और ना रेखा और दर आ गया। ये चीज ध्यान रखिए, कर कार, दर दार और तर तार रेखा नहीं बनाई जाती, इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाता है। अब डबलिंग के रेखाओं को लिखने के स्थान कौन कौन से हैं, उसकी तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना है। जैसे आपने सत्र लिखना है, सा और त्रा, सा रेखा ये, और साथ में त्रा कैसे बनता है, ता प्लस रा को मिलकर बनता है। ये डबलिंग का नियम है, इसलिए ये रेखा नहीं बनेगी। उसी तरह सूत्र है, सूत्र आपने क्या बनाया, सा रेखा, इसी के साथ आपने ध्यान देना है कि त्रा शब्द किससे बनता है, ता और रा से। अब यही अंतर है, अब तर से पहले क्या आ रहा है, ना रेखा को डबल, यहाँ अब ये ध्यान रखना ना से पहले स्वर आ गया है, इसलिए रेखा का लगाना बहुत जरूरी है। अब मेन बात, जब भी आप इस नियम को करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि डबलिंग का नियम करते समय आपने लास्ट में जब स्वर आता है तो उसकी तरफ डबलिंग का नियम लागू नहीं होता।
जैसे ईमानदार, ईमानदार, और यदि यही ईमानदारी आ जाएगा तो इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखें। ईमानदारी, लास्ट के शब्दों को ध्यान में रखना। अब लास्ट में दर है तो इससे पहले आने वाला शब्द ना है। आपने क्या करना है, ये ध्यान रखो, ईमानदार, क्योंकि ना हो का अंत में लगता है। यदि यही ईमानदारी है तब डबलिंग का नियम लागू नहीं होगा। उस स्थिति में आपने क्या करना है, आपने पूरी रेखा बनानी है। आपने पूरी की पूरी रेखा बनानी है कि स्वर के आने पर रेखा बनेगी, स्वर के ना आने पर हुक बनेगा। यह डबलिंग का नियम लागू होगा। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। ये सारा क्लियर हुआ आपको डबलिंग का नियम किसे कहते हैं? अमरजीत मैम, देर इज अ सजेशन इन दी चैट बॉक्स, आप प्लीज अपना मोबाइल का कैमरे को लैंडस्केप व्यू में ले लीजिए। ओके मैडम। हाँ, ठीक है मैडम। एक्चुअली स्क्रीन बहुत छोटा हो रहा है तो वो, और हाथ हिल रहा है जिसने पकड़ा हुआ है, तो वो कह रहे कि स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उनको अच्छे से दिखाई देगा। वो तो फुल है मैडम, किया हुआ हमने। और लैंडस्केप में आ सकता है, ट्राई करते हैं मैडम। ट्राई कर लीजिए मैम, अगर नहीं होता तो फिर कंटिन्यू कर लीजिए। ये डबलिंग के नियम को करते समय इसका ये अपवाद है। ये ध्यान रखिए कि यदि लास्ट में स्वर आ जाए तो नियम लागू नहीं होगा। उस स्थिति में रेखा ही बनाई जाएगी। यदि लास्ट में स्वर नहीं आता तो डबलिंग का नियम लागू होगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिए कि कब रेखा बनानी है, कब डबलिंग का नियम लागू होगा। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि डबलिंग के नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है। वाक्यांश के लिए आपको वाक्यांश मालूम ही है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश जैसे आपने तर और तोर के लिए बनाना है, तर और तोर के लिए, इसके लिए आपने, ये डबलिंग का नियम है। इसे बनाते समय जैसे इस तरह से, या इसके लिए कैसे बनाते हो, इस तरह से। हर तरह से। अब हर के लिए आपने क्या बनाया था, हा के लिए टिक बनाया था, ध्यान है। हा के लिए जब मारा ला से पहले हाँ हा। मैम, आपका स्क्रीन, आपका ब्लैक बोर्ड अब उल्टा हो गया है। आई डोंट नो आपने ये स्क्रीन को क्या किया। हाँ, ऐसे ही रखिए प्लीज, थैंक यू। थैंक यू मैडम। तो इसमें देखिए कि हर के लिए, हा के लिए टिक का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए जब हा से पहले मा रा ला आ जाए तो हा के लिए टिक का इस्तेमाल करते हैं। और सा क्या, इसके लिए सा वृत्त बनाया गया है क्योंकि ये शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्ह के लिए एक ही निशान बनाया जाता है। इस कैसे बनाते हैं ये, अब इस तरह से ये वाक्यांश बन गया। जब दो या दो से अधिक शब्द आ रहे हैं तो उसे वाक्यांश कह रहे हैं। अब है जैसे आम तौर से, आम तौर से, तो अब आपने कैसे किया, आम तौर से। तो इस आउटलाइन को ध्यान में रखना है कि आपने कैसे इन शब्द चिन्हों की या वाक्यांश की प्रैक्टिस की। डबलिंग का नियम करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्यांश किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं ये सारे वाक्यांश हैं। जब ये अकेले में आता है, ये देखो अकेले में, तो इसे शब्द चिन्ह कहते हैं। इन चीजों का अंतर मालूम होना चाहिए।
इन चीजों का अभ्यास करने से स्पीड बहुत जल्दी बन जाती है। अब जैसे जैसे आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये डबलिंग का नियम आपको क्लियर होता जाएगा। अब ये डबलिंग के नियम में छह चीजें कर कार, दरदार और कर कार को ध्यान में रखना है। इन छह शब्दों के आने पर ही डबलिंग का नियम लागू होगा। इसे दुगुनाकरण भी कहते हैं या किसी रेखा को डबल कर देना भी। और वो कई बार पूछ लेते हैं यदि लास्ट में स्वर आ जाए क्या डबलिंग का नियम लागू होगा? कभी भी नहीं। लास्ट में स्वर जो मैंने अभी उदाहरण दिया ईमानदार और ईमानदारी, तो तब ये डबलिंग का नियम लागू ना होकर रेखा ही बनाई जाएगी। इस तरह और तौर पर वाक्यांश भी पेपर में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने से हिंदी में लिखेंगे इस तरह से काफी टाइम वेस्ट होगा। यदि उसे ही आशुलिपि में लिखेंगे तो आधे सेकंड में आप लिख सकते हैं। तो इन वाक्यांशों की अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको ये आउटलाइन अच्छी तरह से आएंगी। उसके बाद इस नियम के अनुसार व्यंजन रेखा स। अब सा के लिए अब आप ध्यान दीजिए, सा के लिए आपने रेखा भी बनानी सीखी हुई है, छोटा वृत्त भी। छोटा वृत्त रेखा के शुरू में, मध्य में और अंत में बनता है। अब ये कह रहे हैं कि सा वृत्त को या रेखा सा को तर और तरा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरह। तो अब इन्होंने डबलिंग का नियम लागू करना है तो इस तरह में तरा रेखा तो बनेगी नहीं, इसके लिए सा रेखा इन्होंने ले ली। ये देखो, अब इसी तरह से इसी तरह से ये सारे वाक्यांश है। इसी तरीके से तो अब आपने इसी तरीके से ये सारे वाक्यांश जो डबलिंग के नियम पर लागू होंगे। अब इन्होंने ये कह दिया है कि यदि चाहिए शब्द आ जाए, चाहिए, तो डबलिंग के नियम में कैसे बनाया जाएगा? चाहिए, इसके लिए अलग से रेखा नहीं बनाई जाती। जैसे आपको पेपर में आ जाए पाना चाहिए, तब आपने इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर देना है। जैसे पाना चाहिए, तो आपने ना रेखा को डबल कर दिया। इसके लिए अलग से कोई आउटलाइन नहीं आपको बनानी। डबलिंग के नियम में उससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाता है। अब जैसे कहना चाहिए, तो आपने कैसे बनाया? कहना चाहिए, ये रेखा को डबल करते जाना है, तो उसे डबलिंग का नियम कहते हैं। और लास्ट में अब आपको इस लेसन में इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लेसन करने के बाद उसके वाक्यांश आपने बहुत ध्यान से करने हैं कि उसमें कैसी रेखा बनानी है और कहाँ डबलिंग का नियम लागू होगा। जैसे है वसंत ऋतु, अब आपने क्या किया? वसंत के लिए वा रेखा, फिर सा का सर्कल, फिर ना, और ऋतु के लिए ता। क्योंकि ऋतु में त्रा किससे बनता है? ऋतु, इसमें ता रेखा बननी है। वसंत में वा, सा का सर्कल, फिर ना रेखा और फिर ता रेखा। ये वसंत ऋतु का वाक्यांश है। अब जैसे है काम करने के लिए, अब आपने क्या किया? काम तो आपने बनाया और करने को करने, ये देखो इसे ही डबल करना है। करने के लिए का भी शब्द चिन्ह है जो स्टूडेंट स्टार्ट करते समय आपने सीखा था। सबसे पहले आप हिंदी आशुलिपि में व्यंजन सीखते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। उसके बाद आपने किए थे स्वर कितने होते हैं? 10, 6 दीर्घ और 4 अल्प। उसके बाद आपने लेसन स्टार्ट किया शब्द चिन्ह। हर एक शब्द के लिए जब एक आउटलाइन बनाई जाती है, जैसे इसके लिए ये शब्द चिन्ह, यदि इसके साथ इस तरह से
या इसीलिए आ जाए या इसीलिए, ये वाक्यांश बन जाते हैं। ये दो शब्द मिल गए हैं तो अब आपने इसीलिए, ये शब्दों का मेल हो जाता है उसे वाक्यांश। उसके बाद आपने द्विध्वनिक स्वर, द्विध्वनिक मात्राएं लगाने सीखी, जो टर्म फर्स्ट में भी बच्चों ने किया। तो उसे करने के बाद लास्ट का नियम डबलिंग का नियम आ जाता है, और हानि का नियम। डबलिंग के नियम नाम से स्पष्ट है, किसी रेखा को दुगना कर देना या डबल कर देना। इसमें कुछ नियम बनाते समय इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आउटलाइन बनाते समय यदि रेखा को डबल किया गया है तो बच्चों को पता होना चाहिए ये डबलिंग का नियम। रेखा को आधा किया गया तो हामिंग का नियम है। तो ये सारे आउटलाइन इसलिए बनाने सिखाई जाती है ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर सके और घंटों का काम मिनटों में कर सके। शोरन सीखते समय ये डबलिंग का नियम सबको क्लियर हुआ? आई थिंक मैम 1 मिनट रुक जाते हैं ताकि यूट्यूब में कोई कमेंट्स हो तो वो हम कर लें। मैम मेजरली तो आपके बोर्ड पे ना एक फ्लैश लाइट आ रही है जिससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को देखने में। ठीक है मैडम, मैं चेक कर दूंगी। हाँ जी, आप जब तक अपना वीडियो चेक कर लिए, अगर थोड़ा इलाज हो जाता है तो करा दीजिए। तब तक मैं यूट्यूब में और कोई चैट कमेंट्स आए हैं तो वो देख रही हूँ। ओके मैडम। मैम देयर इज अ पर्सन जिनको पहले स्ट्रोक्स दिखाई है, उन्होंने लिखा है। ओके मैडम। स्ट्रोक्स के लिए ये लोग कह रहे हैं। अभी कर रहे हैं मैडम, अभी। जी जी बिल्कुल। ये वीडियो, दिस वीडियो जो मैम की शॉर्ट हैंड हिंदी की वीडियोस हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी और हम लोगों ने जितना इलाज कर सकते थे स्क्रीन कर लिया है। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना यूट्यूब का स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लें ताकि उनको भी अच्छे से दिखाई दे। और अगर कभी आपको फ्यूचर में और कुछ समझना है, इसको बार बार वीडियो से कुछ रेफरेंस लेना है, तो ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप बार बार आके इस पे अपना देख सकते हैं। मैडम एक में नेटवर्क इशू आ रहा है मैडम, हाँ, दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ मैडम। ओके मैम। सो मैम इज जॉइनिंग अगेन। अभी स्क्रीन ब्लैंक है तो आप घबराइए मत, मैम इज कमिंग बैक सून। इन बिटवीन सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है उन्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को समझ नहीं आया डबलिंग के नियम में, तो वो फिर एक पूछ में सकते हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है मैडम, दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। ओके मैम। सो मैम इज जॉइनिंग अगेन। अभी स्क्रीन ब्लैंक है तो आप घबराइए मत, मैम इज कमिंग बैक। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी कह रही हैं कि उनको पुनः स्पष्ट हो। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है उन्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को समझ नहीं आया
अमरजीत मैम। हाँ जी मैडम। हाँ मैम, प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, अब हम वाक्यांश कर रहे हैं। डबलिंग के नियम में मैम वाक्यांश आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। अभी मैडम मैं शेयर नहीं किए, एक मिनट। अभी समझाने वाला पार्ट है मैडम, थोड़ा मैं समझा रही हूँ। मैम लोगों को एक्चुअली डबलिंग का नियम वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप समझा दीजिए, क्योंकि उनको आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही थी बहुत। ठीक है मैडम, मैं अभी बता रही हूँ। हाँ। आज हम डबलिंग का नियम पढ़ रहे हैं। डबलिंग के नियम में हम ये देख रहे हैं कि डबलिंग का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। कर का दरदार कर कार पर डबलिंग का नियम। मैम आपकी इको कर रही है वॉइस। आप प्लीज एक बार अपना सिस्टम ठीक करिए। डबलिंग का नियम लागू करने के लिए कर का दरदार और कर कार पर लागू होता है। डबलिंग का नियम ही है किसी रेखा को डबल कर देना। जैसे आपने सुंदर बनाया तो इसमें दर आ गया, ये देखिए दर। अब आपने क्या करना, सा का सर्कल और ना रेखा को डबल करना है। ये रेखा नहीं बनेगी। अगर यही रेखा आगे किसी शब्द में, जैसे रफ्तार है, तो ये तार शब्द आ गया करकार, और ये तीसरा शब्द होता है तरतार। अब ये देखिए तार शब्द आ गया रफ्तार। इस रेखा को डबल कर दिया जाता है। तो इस चीज में डबलिंग के नियम में इस बात को ध्यान में रखना है, किसी रेखा को डबल कर देना ही डबलिंग का नियम कहलाता है। यदि रेखा के लास्ट में स्वर आ जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था ईमानदार और ईमानदारी, ईमानदार आया है तो मां रेखा और ना, इस पर डबलिंग का नियम लागू होगा, क्योंकि इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाएगा। जबकि दारी पर यह नियम लागू नहीं होगा, तब आपने पूरी रेखा ही बनानी है, तब डबलिंग का नियम लागू नहीं होगा। लास्ट में स्वर आने पर डबलिंग का नियम नहीं लगेगा। उस स्थिति में आपने रेखा ही बनानी है। इसमें कुछ वाक्यांश भी बनाए जाते हैं। पहले मालूम होना चाहिए वाक्यांश होते क्या है।
जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे बसंत ऋतु, शुरू कर दिया है। अब आपने कोई भी वाक्यांश लेना है। ये क्यों सीखे जाते हैं? स्पीड बनाने के लिए। कर दिया है, तो अब आपने क्या किया? शुरू कर दिया है। ये आउटलाइन अब आपने ध्यान देनी है, ताकि इन वाक्यांशों का इस्तेमाल करते समय आप इस बात को ध्यान से रखें, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं तो उसे वाक्यांश कह रहे हैं। तो अब शब्द चिन्ह, जब अकेले में कोई शब्द आ जाता है, जैसे अब आपने बनाया व्यवहार, तो ये क्या है? ये शब्द चिन्ह। एक रेखा बनाई है तो उसे शब्द चिन्ह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं जोड़कर या शब्द जोड़े जाते हैं तो वो वाक्यांश कहलाते हैं। तो इस तरह ये डबलिंग का नियम आपको ध्यान से करना है कि डबलिंग का नियम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे किसी रेखा को दुगना करने पर उसमें करकार, दरदार और तरतार का योग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डबलिंग का नियम बोलते हैं। अब वाक्यांश में सा व्यंजन रेखा को तर और तर के लिए क्या किया जाता है? रेखा बनाई जाती है। हमने पहले भी की हुआ है। इसके लिए सा रेखा बनेगी। जैसे इस तरह से आ जाए तो इस तरह। तो ये वाक्यांश अब आपने ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ ये तो था डबलिंग का नियम। अब हमने करना है हामिंग का नियम। ये देखिए हामिंग का नियम। इसमें ट, ठ और त और द, ये चार व्यंजन रेखाएं आने पर हामिंग का नियम लागू होता है। अब हामिंग के नियम में अब आप बताइए, किसी रेखा की लंबाई को क्या किया जाता है? आधा। इसे अर्धकरण भी बोलते हैं। अर्धकरण या हामिंग का नियम। इसमें रेखा की जो लंबाई होती है ना, लंबाई वो आधी हो जाती है। आधी, उसे हामिंग का नियम बोलते हैं। जैसे कई बार स्पीड बनाने के लिए सुविधा के अनुसार कोई व्यंजन रेखा पूरी ना बनाकर उसे आधा कर दिया जाता है, या कोई शब्द वाक्यांश बार बार आता है, प्रयोग में आता है, तो उसे पूरा लिखना सुविधाजनक नहीं होता। उस स्थिति में भी आउटलाइन को बनाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें ट, ठ, त और द, ये चार व्यंजन रेखाएं आने पर हामिंग का नियम लागू होता है। इसमें ये भी व्यंजन रेखाएं नहीं बनती। इससे पहले आने वाली व्यंजन रेखा को आधा कर दिया जाता है। जैसे अब आपने पठ बनाना है, जैसे पठ। अब ठा तो बनेगा नहीं, इससे पहले आने वाला प रेखा को आधा कर दिया जाता है। अब जैसे प, पठ। पात, पा, ये आ का स्वर है जो लाइन से ऊपर बनता है। पा रेखा को आधा कर दिया। अब यही है बद्ध, भा रेखा को ये आधा किया जाता है, उसे हामिंग का नियम कहते हैं। अब कहते हैं एक से अधिक व्यंजन रेखाओं के साथ, एक से अधिक व्यंजन रेखाओं के साथ यदि ट, ठ, ता और दा में से कोई रेखा आ जाती है तो उसे कैसे आधा किया जाता है? जैसे शब्द है। अब शब्द में कैसे करते हैं? श और बा रेखा, द नहीं बनेगा। इसी प्रकार पटवारी है, पटवारी, पा रेखा को आधा, फिर साथ में टा भी आ गया, टा नहीं बनेगा। इससे पहले आने वाली रेखा को आधा किया जाता है, वो होता है हामिंग का नियम। अब हामिंग के नियम में आपको मेन इस बात का
ध्यान देना है कि इन चारों शब्दों के आने पर हामिंग का नियम लागू होता है। समझ आया? ये हामिंग का नियम क्लियर हुआ? द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड, अगर हार्विंग का नियम क्लियर हो गया है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, अदरवाइज आपको जो समझ नहीं आ रहा देन वी कैन आस्क मैम टू रिपीट। अमरजीत मैम एक बार प्लीज हार्विंग का भी नियम रिपीट कर दीजिए। ओके मैडम, ओके। हामिंग का नियम, हामिंग के नियम को हम अर्धकरण या हार्विंग का नियम भी बोलते हैं। इसमें किसी रेखा की लंबाई को आधा किया जाता है। जैसे अब आपको हमने बता दिया पट, इसमें था तो बनेगा नहीं, इससे पहले आने वाली रेखा प को आधा कर दिया जाता है। अब जैसे पटवारी शब्द है, पटवारी, इससे पहले टा रेखा नहीं बनेगी, पा रेखा को आपने आधा किया, वारी। अब यही है भगवत, भगवत। अब आपने क्या किया, भा रेखा बनाया, का रेखा बनाया, आए, भगवत, वा रेखा, वाह। ये इस शब्द का ध्यान रखना है। अब होता है कई बार शब्दों के अंत में हुक कहा जाता है। हुक का मतलब क्या होता है, अंतिम हुक। हुक अंत में कौन सा लगता है, ना का हुक, और शुरू में कौन सा लगता है, रा का और ला का हुक। ये भी मालूम होना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे। अब हुक है, जैसे डांट है, डा और टा, ऊपर ना का हुक, डा और ये ना रेखा, ये कंठ, का और ना रेखा। इस चीज में ध्यान रखना है कि ना हुक अंत में लगाया जाता है और रा हुक शुरू में लगता है। तो तब भी इससे बनने वाले आउटलाइन को आपने प्रैक्टिस करनी है कि कैसे नियम लागू आपने करना है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो जाता है हामिंग का नियम किसी रेखा को आधा कर देना। अर्थात जैसे आप कोई भी रेखा बनाते हैं, पा ऐसे बनाते हैं पूरा, जब हामिंग का नियम आता है तो ये रेखा आधी हो जाती है, ये देखिए आधी हो जाती है, तो वो हामिंग का नियम है। तो ये नियम को भी ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ये चार व्यंजन आपको याद कर लेने हैं कि इस पर हामिंग का नियम लागू हो जाता है। अब मा, ना और ला, ये रेखा कैसे बनती है, मा ये, ना ये और ला। ये रेखाओं को आधा करने पर इन्हें आधा करेंगे तो पतली रेखा के लिए ता और टा का योग होगा और मोटी रेखा के लिए दा का योग। अब आपने इसमें ध्यान देना है, ये टा और ता, जैसे आपने कोई आउटलाइन बनानी है, नटवर, न ट व र, आपने कैसे बनाया, ना रेखा और व, टा रेखा नहीं बनेगी क्योंकि यह हामिंग का नियम लागू हो रहा है। और अहमद है, अहमद, ये दा आया लास्ट में, अहमद, तो ये माँ रेखा को मोटा करके लिखा जाता है या डार्क करके लिखा जाता है, क्योंकि दा रेखा डार्क बनाई जाती है। आप कई बार ऊपर किए
और लिखे जाने वाला, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाने वाला है रा का नियम। रा का नियम। अब रा, रा भी आपने दो तरह से बनाने सीखे, एक ये और ये। अब इसके लिए ये देखिए, जब डाउन में आता है, जब हा, रा डाउन में आता है तो हा कैसे बनता है? तो हा को हम टिक में बनाते थे, ध्यान है। तो इस बात में जैसे हर आ गया, हर, आपने हर, अगर यही हर एक आ जाएगा, हर एक, तब आपने कैसे करना है? हर एक। तो इन शब्दों को आपने देखना है कि हा को टिक में कैसे बनाना है। पहले हा के लिए रेखा बनती थी, हा ऐसे और ऐसे बनता है, लेकिन कुछ स्थितियों में मा रा ला से पहले हा आ जाए। ये तीन शब्द थे ना, मा रा और ला से पहले हा आ जाए, तो हा को कैसे बनाते थे? टिक में बनाते थे। सेम वैसे ही अब रा आ गया, रा से पहले हा है, तो अब आपने हा को टिक में बनाया है। तो इसी तरह ही कुछ शब्द है, जैसे अर्थ है। अब रा ऊपर से नीचे, क्योंकि रा से पहले क्या आ गया? स्वर आ गया है। स्वर के आने पर रेखा ही बनेगी, तब ये नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अर्ध रेखाओं को लिखने का स्थान भी बदल जाता है। ये हमेशा पहले और दूसरे स्थान पर बनते हैं, कभी तीसरे स्थान पर नहीं बनते। तीसरा स्वर ई और ऊ के आने पर भी ये लाइन पर बनेंगे, क्योंकि हामिंग का नियम ही ये बताता है कि किसी रेखा को आधा कर दे। क्लियर? अब ये विभिन्न व्यंजन रेखाएं हैं, ये व्यंजन रेखाएं हैं। व्यंजन रेखाओं में ये कहा जाता है कि ये चारों शब्द आने पर, अब एक से अधिक व्यंजन रेखाओं पर एक साथ बने बड़े शब्दों में, उस रेखा में ट, ठ, त, और दा, ये चार शब्द आने पर भी हामिंग का नियम लागू होगा। ये व्यंजन रेखाएं हैं। और ये जो अभी हमने पटवारी वगैरह किया था, या शब्द किया, जैसे एक से अधिक व्यंजन रेखाएं, जैसे शब्द है शा और बा रेखा, ये देखिए दा रेखा आया, ये दा रेखा नहीं बनने, इससे पहले आने वाला बा रेखा को हमने आधा कर दिया। ये एक से अधिक व्यंजन रेखाओं में एक साथ बने बड़े शब्दों में, उस स्थिति में भी ये नियम ध्यान में रखना है कि ये चारों व्यंजन रेखाएं आ जाएंगी। ये आएगा द रेखा, तो ये डार्क में बनेगी और ये बनेगी लाइट में। इस रेखा को भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये एक से अधिक व्यंजन जो अभी आप पूछ रहे हैं, एक से अधिक व्यंजन रेखाओं को एक साथ आने पर ट, ठ, त और दा, ये भी व्यंजन है। इसके लिए कैसे आधा करके लिखा जाता है, इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको पटवारी शब्द बताया, पटवारी, ये देखिए ये सारे व्यंजन है, एक से अधिक व्यंजन है। अब हमने पा से पहले, टा से पहले पा रेखा है, पा रेखा को हमने आधा कर दिया और वारी के लिए वा के साथ ही रा ऊपर चला गया, तो ये पटवारी बन गया। ये सारे व्यंजन है एक से अधिक, जिन्हें आधा किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि लास्ट में हुक, हुक अंतिम हुक कौन सा होता है? अंतिम हुक, ना के लिए आप इस्तेमाल करते हो ना। अब जैसे आपने कोई शब्द लेना है, कंठ का, कंठ, अब ये तो नहीं बनेगा का रेखा और ना रेखा, क्योंकि ये अंत में आता है। बंद, बा रेखा और ना रेखा, क्योंकि ना हुक हमेशा अंत में आता है। अब जैसे बंद आपने कर लिया, उसी तरह ही व्यंजन रेखा मा, ना और ला, इनके आने पर भी जो ता और टा होता है, वो तो हल्की रेखाएं बनती हैं। अब ये देखिए,
अब जैसे महावत शब्द है, ये व्यंजन है, सारे ध्यान में रखिए। महावत। अब माँ रेखा, ये देखिए, हा से पहले माँ आता है तो हा डाउन में बनता है, महावत। इस शब्द को ध्यान में रखिए। आप सोचेंगे हा ऊपर वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि हा से पहले माँ रेखा आती है तो हा हमेशा डाउन में बनता है। तो तब आपने प्रैक्टिस करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि महावत। यही अगर डांट आ गया, ट, डांट, तो डा और ट, इसी तरह ये व्यंजन रेखा है, ये सब व्यंजन है, ये स्वर नहीं देखना। अब ये आपने ध्यान रखना है कि हा से पहले माँ है तो हा कौन सा बनेगा, हा डाउन वाला बनेगा, नीचे वाला। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। आप जैसे नटवर, नटवर, ये व्यंजन रेखा है, ठीक है। ना तो आपने बनाया, ना बनाया, टा नहीं बनाना, ये टा है, ये आपको नहीं बनाना। फिर वर, नटवर, इसी के साथ रा ऊपर चला गया। अब जैसे जल्लाद है, अब ज और ला, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन या एक से अधिक व्यंजन एक साथ आने पर तब क्या ये हामिंग का नियम कैसे बनाया जाता है या कैसे आदे किया जाता है। तो ये सारे व्यंजन ही तो है, ये ट, पा, ट, व और रा। स्वर तो ये है, ई की मात्रा और आ, ये व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। महावत है, माँ है, हा है, व और त, ये कैसे व्यंजन हामिंग के नियम पर लागू होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। और यदि इन्होंने बताया है कि मा, रा, ला, तीन शब्द है, तीन शब्द, मा, ना और ला, ये तीन शब्द आने पर हामिंग का नियम, इसमें ता और ता के लिए तो पतली रेखा बनेगी और दा के लिए डार्क रेखा बनेगी। अब इसका भी एक एग्जांपल सोच लो कैसे बनता है। जैसे अहमद आपने बनाया, अहमद, ये देखिए, हा ये है और माँ ये। अब आप ये कहेंगे माँ से पहले हा आएगा, तो हा से पहले स्वर भी तो आया है, इसलिए इसमें टिक ना लगाकर हा डाउन में बनेगा। इस चीज को, नियम को ध्यान में रखना है आपने कि कब आपने टिक बनाना है, कब आपने नीचे की ओर के हा का इस्तेमाल करना है और कब आपने ऊपर के हा का इस्तेमाल करना है। जी, पहले स्टार्टिंग में हमने नियम पढ़े थे, तब आपने ध्यान रखना है। कब मा, र, ला, ये तीन शब्द आएंगे तो इससे पहले यदि हा आता है तो हा टिक में बनाया जाएगा। टिक, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे हम बनाते थे, हम कैसे बनाए, हा और माँ। हर्ष बनाया, कैसे था, हर्ष। यही हलचल है, हलचल, आपने कैसे बनाया, हल और चल। तो ये नियम थे कि कब आपने टिक का इस्तेमाल करना है, कब आपने ऊपर से नीचे की हा का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर नियम लागू करने हैं। और हामिंग के नियम में भी लास्ट में स्वर आने पर, जैसे पत और पत्ता, अब पत है, पत, इसमें अंतर सोचो। लास्ट में स्वर है, स्वर के आने पर पूरी रेखा पा और ता, पत में ये चीज का अंतर ध्यान। जैसे लत और लता, लत ऊपर और लता पूरा नियम। तो ये जैसे आपने डबलिंग के नियम में पढ़ा था, लास्ट में स्वर आने पर नियम लागू नहीं होगा, वैसे हामिंग के नियम में भी लास्ट में स्वर आने पर नियम लागू नहीं होगा। उस स्थिति में आपने केवल रेखा ही बनानी है। ये पूरा क्लियर।
स्वर है। आ का स्वर कैसे लगता है? आ का स्वर हमेशा प्रथम स्थान पर। एक रेखा के 3 स्थान होते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। पहले स्थान पर आ का आता है, दूसरे पर ए का, तीसरे पर ई या ऊ का आता है, या छोटा ई या बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये पहले स्थान हमेशा लाइन से ऊपर आएगा, दूसरा स्थान लाइन पर आएगा, तीसरा स्थान लाइन से नीचे, ई और ऊ का स्वर। उसी तरह लता है, ये लाइन से ऊपर बना है, क्योंकि ता के बाद आ का स्वर है, ये पहले स्थान पर आएगा। इसी तरह पता है, पा और ता रेखा, तो ये स्वर हमेशा पहले स्थान पर। आ का स्वर पहले स्थान पर, ए का स्वर सेकंड स्थान पर, और ई और ऊ का स्वर थर्ड स्थान पर आएगा। स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं। अमरजीत मैम, देयर आर सम क्वेरीज ऑन द यूट्यूब चैट, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी हाँ जी मैडम, बोलिए। एक है शिखा जी, उन्होंने कहा है क्या प्रत्येक व्यंजन के साथ आ की मात्रा ना होने पर भी उसका उच्चारण करना है? हाँ जी, उच्चारण तो करना ही है। जैसे शब्द कोई भी ले लीजिए, जैसे लत है, लत शब्द है, इसमें आ का स्वर नहीं है, तब भी तो उच्चारण में लत के में आवाज आ रही है, तो ये हमेशा ये लाइन पर ही बनाया जाएगा। पत है, पत, इसमें भी आ का स्वर नहीं है, तो ये भी, ये रेखा को, व्यंजन रेखा को आधा किया गया, क्योंकि हामिंग का नियम है। हामिंग के नियम पर ये कभी भी लाइन से नीचे नहीं बनेंगे। हामिंग का नियम हमेशा लाइन से ऊपर और लाइन पर बनेंगे, क्योंकि हमने रेखा की लंबाई को आधा कर दिया। मैम, दूसरा क्वेश्चन है, स्वर एवं व्यंजन के स्ट्रोक्स बताइए। हाँ जी, अब आपको ये तो स्टार्टिंग में पता ही है स्वर किसे कहते हैं। स्वर कैसे, कितने होते हैं मालूम है सबको? स्वर 10 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 6, और अल्प स्वर 4, टोटल कितने होते हैं? 10। अब ये दीर्घ स्वर कैसे, ये अलग से स्टार्टिंग के चैप्टर है 11th में। सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन पढ़े हुए हैं ना आप सबने। सबसे पहले क्या बनाया जाता है? क, ख, ग और घ, ये सब व्यंजन रेखाएं हैं। क, ख, ग और घ। अब इनके साथ स्वर लगा दो। अब आ का स्वर है तो हमेशा पहले स्थान पर, ये देखिए, खा आपने बनाया पहले स्थान पर। यदि यही स्वर ए का हो जाएगा, ए का, तो वो दूसरे स्थान पर आएगा। जैसे आपने के बनाया तो ये सेकंड स्थान पर। ये स्वर का चैप्टर स्टार्टिंग में, जो जब हमने स्टार्टिंग में स्टूडेंट सीखी जाती है, तब स्वर लगाना सिखाया जाता है। तो कैसे व्यंजन रेखाओं के साथ हामिंग के नियम में जब रेखा ही आधी हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो तीसरा स्वर है, ई का स्वर, वो हमेशा लाइन पर बनता है, क्योंकि आधी होने पर नीचे आने का मतलब ही नहीं है। डबलिंग के नियम में हमने किया था, रेखा को डबल किया था, वो लाइन से नीचे चली जाती थी। हामिंग के नियम में हर रेखा आधी कर दी है, तो इसलिए वो सारी रेखाएं लाइन पर बनेगी, लाइन से नीचे नहीं आएगी। मैम, एक और क्वेरी है, कृपया हर एक अक्षरों की स्ट्रोक को सिखाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है मैडम। जैसे अभी आपको मैंने अभी बताया, पटवारी, ये शब्द देखिए, ये व्यंजन रेखाएं हैं। पहले आपको स्वर और व्यंजन पता होने चाहिए। ये जैसे पा, टा, वा और रा, ये सारे व्यंजन है, और आ की मात्रा और ए की मात्रा ये स्वर होते हैं। अब इसे लिखने का ढंग भी देख लीजिए। पटवारी में पट कैसे है, क्योंकि ये टा का नियम भी है। ऊपर देखिए, ये देखिए,
और ये कौन सा नियम है? हामिंग का नियम। ये तीनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है। पहले पट के लिए पा रेखा को आधा किया गया, फिर वारी के लिए ये पूरी रेखा बनाई गई है। अब वा के बाद आ का स्वर है, तो आ का स्वर पहले स्थान पर, और ई का स्वर कहाँ लगेगा? रेखा के लास्ट में। स्वर लगाने के भी तो 3 स्थान होते हैं, लाइन से ऊपर या पहले स्थान पर, दूसरा स्थान लाइन के बीच में, तीसरा स्थान लाइन अंत में। तो ये आपने तीनों स्वरों को पहले ध्यान से सीखना है। स्टार्टिंग के चैप्टर है जो आपने 11th के स्टार्टिंग में किए होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे। उसके बाद तो बाकी सारे नियम क्लियर हो जाते हैं। जैसे असीमित है, पहले इनमें अंतर सीखो कि स्वर कौन से, व्यंजन कौन से। ये देखो आ का स्वर है, सा का व्यंजन है, फिर ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब आपने क्या किया, सा रेखा है और माँ पर ये डबलिंग का नियम लागू, हामिंग का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ता की रेखा है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, मैडम ये सा रेखा क्यों बनाई है? क्योंकि सा से पहले यदि स्वर आ जाता है तो सा वृत्त में नहीं बनाया जाता, सा व्यंजन रेखा ही बनी जाएगी। और लास्ट में ता रेखा आ गई, ता हामिंग का नियम है, इसलिए हा रेखा नहीं बनेगी। तो इन सब व्यंजन रेखाओं और स्वरों को ध्यान में रखना है। जो स्टार्टिंग के आपने 2 चैप्टर किए हैं, स्वर और व्यंजन, पहले वो पूरे क्लियर होने चाहिए कि स्वर कैसे लगाए जाते हैं। व्यंजन टोटल 33 होते हैं, स्वर 10 होते हैं, 6 दीर्घ स्वर, 4 अल्प स्वर। दीर्घ स्वर कैसे लगाए जाते हैं? डार्क में, दीर्घ नाम से स्पष्ट है, डार्क बिंदु या डैश में। अल्प स्वर को हल्के बिंदु और डैश में लगाते हैं। तो इन्हें लगाने के सारे नियम हैं। तो एक एक नियम को आपने ध्यान में रखना है कि कब रेखा बनेगी, कब सर्कल बनेगा, कब वृत्त बनेगा। क्योंकि अब सा है, आप अगर नियम देखो तो सा वृत्त रेखा के शुरू में, मध्य में, अंत में बनता है, लेकिन इससे पहले स्वर आ गया, इसलिए ये रेखा ही बनेगी। तो इसके आगे आ का स्वर डाल लेंगे आप। सीमित के लिए ई की मात्रा है, तो ये तीसरे स्थान पर। तो ये आपने ध्यान देना ही देना है कि आपने कैसे कैसे स्वरों और व्यंजनों का इस्तेमाल किया। चलो 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं मैडम। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मैम, एक है, हार्विंग का नियम कब लागू होता है? हामिंग का नियम बेटा देखो, ट, ठ, ता और दा पर ही लागू होता है। स्वर के आने पर नियम लागू नहीं होता। ये मैंने पहली लाइन दी है, ये देखो बेटा, ये इस पर हामिंग का नियम लागू होता है। ये एक 4 शब्द, बार एक बार फिर से बोलेंगे मैम, ये 4 अक्षर जो हैं? ठ, ता और दा पर हामिंग का नियम लागू होता है। ये चारों शब्द मैंने अंडरलाइन कर दी। ठीक है मैम, बस एक और क्वेरी है, वो है विभिन्न वर्णों के लिए प्रयुक्त रेखा के बारे में भी बताएं। अच्छा, ये देखे बेटा, सभी ने ये रेखाएं तो बनाई हैं, आप देखिए। केवल इनमें ये चीज का ध्यान रखने हैं, इन दोनों नियमों में हामिंग नाम ही स्पष्ट है, अर्धकरण या रेखा की लंबाई को आधा कर देना। तो तब ये रेखाएं आपने आधी की हैं, तो ये पटवारी में नहीं तो आप पा रेखा कैसे बनाते बेटा, ये देखिए, अब इसे आधा कर दिया गया, तो पटवारी में टा रेखा तो हमने बनाई नहीं, क्योंकि ये हामिंग का नियम है। इसके बाद आने वाली रेखा को आपने बनाया है वा रेखा और साथ में र, क्योंकि रा ऊपर जाएगा, लास्ट में स्वर है। तो इस तरह ये वर्णों को कैसे बनाना है, ये इसे प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा कि हामिंग का नियम पहले क्या है, डबलिंग का नियम क्या है। इसका दूसरा नाम है हामिंग का नियम अर्धकरण, और डबलिंग के नियम को कहते हैं दूना करना। ये नाम से स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए ये 4 शब्द आपको याद करने हैं जिसमें हामिंग का नियम लागू होगा।
मैम एक और क्वेरी है, अगर आपको ब्रेक लेना है तो हम कितने मिनट्स का ब्रेक चाहिए मैम? 2 मिनट्स ब्रेक ले लें? जी हाँ जी मैडम। आप 2 मिनट्स ब्रेक लेते हैं, मैम भी थोड़ा सा, शी विल हैव सम वाटर एंड देन शी कम बैक। आप जब तक, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग डबलिंग एंड हार्विंग, आप उसके उसके लिए प्लीज चैट बॉक्स में पुट अप कर लीजिए, so that जब मैम वापस आएंगे तो we can ask her the questions. So you can also take 2 minutes break. It is 10. It's 11:31. We'll meet at 11:33. I can answer few questions. रेजा जी आप कह रही हैं कि बोर्ड की स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है मैम, वी रियली नीड टू सपोर्ट ईच अदर। आई एम श्योर अमरजीत मैम भी पूरी कोशिश कर रही है कि काफ़ी अच्छे से सारी ट्रेनिंग हो जाए। तो आप, हमने मैक्सिमम साइज कर दिया है यूट्यूब में। आप जो यूट्यूब का स्क्रीन है उसको आप अपने अपने जो भी डिवाइस पे उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। मैंने कोशिश करा है ऐसे करने से एंड आई कैन सी कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो जो जिनको भी देखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है, हमारी तरफ से पूरा स्क्रीन है, आप लोग यूट्यूब का स्क्रीन प्लीज लार्ज कर लीजिए। आई विल आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, आप प्लीज इसे पुट अप कर लीजिएगा यूट्यूब की चैट्स पे। एंड आई हैव ऑल्सो पोस्टेड दी अटेंडेंस लिंक, मेक श्योर आप उसे आराम से इस 2 मिनट्स ब्रेक में फिलअप कर लीजिए। मैम असेसमेंट लिंक अभी नहीं आएगा, दैट विल कम ऑन योर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किया है। अभी कोई वीडियो नहीं चल रहा है, मैम इज टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक, सो यू प्लीज यूज दिस 2 मिनट्स। You can put up your questions on the chat box as well as fill up your attendance form. अटेंडेंस लिंक है, अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे, जस्ट क्लिक ऑन इट, इट इज अ गूगल डॉक, आपको बस उसे फिल करना है एंड जस्ट सबमिट इट, सो इट विल कम टू अस। अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है, आप प्लीज चैट बॉक्स को पीछे जाके देखेंगे, यू विल गेट द अटेंडेंस लिंक। अगेन आई विल पोस्ट इट अराउंड 12 o'clock, सो इफ इन केस जिसको नहीं मिला है वो तब फिल कर सकते हैं। जी आज के असेसमेंट आज ही आएगा आफ्टर 2:30। कृपया मुझे बताएं इसका उपयोग कैसे करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, मैं विनय जी समझ नहीं पाई। I will send again the attendance link. Please don't worry. At 12 o'clock, I'll post it again. Certificates only after completion of certification and assessment. And assessment has to be at least 60%. Okay, so now I'm calling Amarjeet ma'am back. Amarjeet ma'am, can you come back please? हाँ जी ओके मैडम ओके। मैम थोड़े क्वेश्चंस हैं, मैं पूछ लूं पहले फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, आई नो इसका आंसर मुझे भी पता है क्योंकि आपने सेशन में बोला है, पर कोई पूछ रहा है कि स्वर कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं। 10 स्वर होते हैं। 6 दीर्घ और 4 अल्प स्वर होते हैं। हाँ ठीक है, सो मुक्ता जी आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेरी। एनीबडी एल्स? वरना आप अभी पुट अप कर लीजिएगा, मैं मैम से 10 मिनट्स बाद पूछूंगी। ऑफिस प्रोसीजर्स का 12:30 पे स्टार्ट होगा। मैम प्लीज स्टार्ट।
ओके मैडम। अब ये हार्मिंग का नियम सबको क्लियर। अब पढ़ेंगे डबलिंग का नियम। डबलिंग के नियम में आपने देखना है कि डबलिंग का नियम नाम से स्पष्ट हो जाता है कि किसी रेखा को डबल कर देना या दुगना कर देना। दुगना करना ही डबलिंग का नियम कहलाता है, जिसमें तरतार, दरदार और करकार का योग हो जाता है। इसे डबलिंग का नियम कहते हैं। इसमें भी ध्यान, हार्मिंग के नियम में किसी रेखा को आधा कर देना, डबलिंग के नियम में किसी रेखा को डबल कर देना। अब जैसे आप लिख रहे हैं केंद्र, ठीक है। अब का रेखा डबल और इसमें ना का हुक, क्योंकि ना हुक रेखा के अंत में बनता है, ये शब्द नहीं बनेंगे। इससे पहले आने वाले शब्द को डबल किया जाता है। जैसे आपने सरकार बनाया, तो सा का सर्कल और रा रेखा, ये कार शब्द नहीं बनेगा। इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाता है। जैसे सुंदर, अब आपने सा का सर्कल और ना रेखा को डबल कर दिया। तो पहले नियम क्लियर होना चाहिए। डबलिंग का नियम कहते किसे? जब किसी रेखा को दुगना कर दिया जाता है उसे डबलिंग का नियम कहते हैं, जिसमें तरतार, दरदार और करकार का ये 4-6 शब्द है, ये नियम में होंगे तो डबलिंग का नियम। जैसे केंद्र है, ये दर नहीं बनेगा, इससे पहले आने वाले शब्द को ध्यान में रखा जाता है। ये ना है तो ना अंतिम हुक है। सरकार में ये कार नहीं बनेगा, इससे पहले आने वाला सा रेखा। अब आप पूछेंगे सा वृत्त क्यों बनाया? यदि सा से पहले स्वर आ जाता तो हम रेखा बनाते। ये सरकार शब्द चिन्ह भी है, तो सरकार कैसे बनाया जाता है? सा का सर्कल और रा रेखा। अब सुंदर है, ये देखिए दर शब्द आ गया है, हमने इससे पहले आने वाली रेखा सा का सर्कल और ना रेखा, सुंदर। इसी तरह लगातार, लगातार। अब आपने तार नहीं बनाना, अब आपने ला रेखा और गा रेखा, लगातार। तो इन शब्दों को आपने ध्यान से देखना कि पहले डबलिंग का नियम कहते किसे? किसी रेखा को दुगना कर देना। क्यों किया जाता है? ताकि स्पीड से लिखते समय, गति से लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि घंटों का काम मिनटों में कैसे किया जाता है। ये एक स्टेनोग्राफर अच्छी तरह से जानता है। जब वह वाक्यांश बनाने सीख जाता है, जैसे पूरा मैं समझता हूँ कि हिंदी में लिखते समय कितना टाइम लगता है, वही स्टेनोग्राफी में लिखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट में बन गए। तो यही तो है स्पीड बनाने के नियम। कैसे कैसे आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। तो ये डबलिंग के नियम में इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अब डबलिंग के नियम में जैसे बिंदी, बिंदी के लिए अंक की बिंदी, जैसे लंगर आ गया, तो अब ये घर तो नहीं बनेगा, ला रेखा और ना, इसकी जगह बिंदी की जगह ना रेखा बनेगा। तो इसी तरह जैसे चंदर है, चंद, अब दर नहीं बनना, 4 रेखा ना हुक अंत में लगता है, रा हुक शुरू में लगता है, ना हुक अंत में लगता है। जैसे आपने केंद्र किया था, अगर यही लतर आ जाएगा, लतर, ला, ला रेखा को डबल, ये तो बनेगा ही नहीं, ला रेखा को डबल कर दिया। इसी तरह ये डबलिंग के नियम को लागू किया जाता है। अब यदि लास्ट में स्वर आता है, अब ये भी ध्यान रखें, स्वर के आने पर, स्वर के आने पर क्या डबलिंग का नियम लागू होगा? कभी नहीं, तब रेखा ही बनाई जाएगी। आपने किया था ईमानदार और ईमानदारी, इन
दोनों शब्दों को बनाने को। ईमानदार ने, ये डबल ये नहीं बनना, पहले माँ रेखा और ना। और ईमानदारी में क्या करेंगे, माँ ना दा रे, लास्ट में स्वर भी लगाओ। अगर पूरे पूरे स्वर लगाने हैं तो पूरे लगाओ। तो ये नियम को लागू करते समय आपने ध्यान देना है कि कैसे कैसे आपने ये स्वर लगाने हैं। ये लास्ट में ध्यान रखिए, ये शब्द आएंगे तो यहाँ ये डबलिंग का नियम, अक्षरों की पहचान भी होनी चाहिए। दर दार है, ये देखो दर और दार, तो ये अक्षर है, तो इस पर भी डबलिंग का नियम लागू नहीं होगा स्वर के आने पर। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्वर के आने पर डबलिंग का नियम लागू नहीं होगा, उस स्थिति में रेखा ही बनाई जाएगी। अब वाक्यांश में डबलिंग का नियम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वाक्यांश, वाक्यांश तो सबको पता है, किसे कहते हैं वाक्यांश। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, ये देखो दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं। अब है मिसाल, ये बन गया के तौर पर, ये वाक्यांश है। इन्हें क्यों बनाया जाता है, हिंदी में लिखते समय काफी टाइम लगता है, शॉर्टहैंड में लिखते समय कुछ ही मिनटों में आपसे बन जाए। अब जैसे सुझाव के तौर पर, अब सुझाव तो शब्द चिन्ह आपने सीखा ही हुआ, तो इसके साथ ही सुझाव के तौर पर, तो ये नियम को आपने ध्यान रखना है। उसी तरह यदि शब्द के लास्ट में चाहिए आ जाता है, चाहिए, तो कैसे बनेगा। जैसे आपने देना चाहिए, खाना चाहिए, पाना चाहिए, कोई भी शब्द देना चाहिए, तब ये नहीं बनता, इससे पहले आने वाली रेखा को डबल कर दिया जाता है। जैसे आपने देना चाहिए, तो इन आउटलाइनों को बनाते समय ये देखना है कि वाक्यांश बनाना आपने कैसे सीखा। तो अब आपने विशेषकर इस नियम में, इस बात, इन दोनों नियमों में अंतर क्लियर हो गया। पहले ये बताएं, ता, था, ता और दा, ये चार शब्द आएंगे तो हामिंग का नियम लागू होगा, ये 6 शब्द आएंगे तो डबलिंग का नियम लागू। क्लियर। तो ये नियम, जब आप डबलिंग और हामिंग का नियम कर लेते हैं, एक तरह से शॉर्टहैंड पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। शुरू में सबसे पहले आपने व्यंजन बनाने सीखते हैं, फिर स्वर, फिर शब्द चिन्ह, फिर रेखाओं का मिलान करना, फिर वाक्यांश कैसे, फिर द्विध्वनिक स्वर, द्विध्वनिक व्यंजन, त्रिध्वनिक स्वर, फिर आपने यौगिक व्यंजन, फिर लास्ट में आप रा हुक, ना हुक, अंतिम हुक, क्षण हुक, ये सीखते हैं। और लास्ट चैप्टर हामिंग और डबलिंग का नियम, इसे करने के बाद आपकी शॉर्टहैंड पूरी कंप्लीट हो जाती है। फिर मकसद हो जाता है आपको स्पीड से लिखना। उसके लिए आपको बार बार प्रतिदिन इन वाक्यांशों और शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन सा नियम कब लागू होता है। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके नियम क्लियर होते जाएंगे।
इसी प्रकार वाक्यांश में डबलिंग के नियम को कुछ अन्य तरह से भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने कोई भी शब्द ले लिया, मानकर कोई दे दिया, तो सबसे पहले आपने देखना ये है कर आ गया, ये तो डबलिंग का नियम है, तो आपने क्या कर दिया, मानकर। इसी तरह ही कोई शब्द चिन्ह हामिंग के नियम से भी आपको आ सकते हैं। तब आपको ये देखना है कि हामिंग के नियम में आपने कैसे नियम का इस्तेमाल किया। जैसे आपने अब तक, जब तक, तब तक। अब अगर ये देखा जाए अब, जब और तब, ये शब्द चिन्ह है। ये देखो अब, जब और तब। अब लाइन से ऊपर, जब लाइन पर और तब लाइन से। अब तक, तक के लिए इन्होंने का रेखा, ये भी का रेखा, और ये बन गया अब तक, जब तक, तब तक। तो ये अब आपने ध्यान देने हैं, ये वाक्यांश ही है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? स्पीड से लिखने के लिए वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाता है। जो काम पहले हम हाथ से लिखते समय पूरी आउटलाइन या पूरा हिंदी में लिखते समय हमें घंटों लग जाते थे, वही आशुलिपि सीखने से हम घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। तो इसलिए ये वाक्यांश बनाना हम सीखते हैं। ओके, स्वाति मैडम। यस मैम। मैडम ये टॉपिक कंप्लीट, कुछ पूछना चाहते हैं तो? हाँ, तो आई विल रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज put your queries on the YouTube because ये बहुत important एक टॉपिक है जिसके बेसिस पे ही आप आगे वर्क कर पाते हैं। सो इफ देयर इज एनीथिंग आप प्लीज पूछे इस समय। I request the participants to please put up their queries so that I can put it up to ma'am. हार्विंग एंड डबलिंग के नियम का टॉपिक ओवर हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज बताइए। ओके, स्टडी मटेरियल, एक सेकेंड प्लीज। यस मैम। मैडम मैं PDF शेयर कर दूंगी आपको। आपको YouTube में नहीं जाना, आपको जीमीट में जाना है। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा मैम। जब आप आओगे ना ऑनलाइन तो मैं आपको बता दूँ। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज उसे पुट अप कीजिए। मैम अमरजीत मैम, आप थोड़े से एग्जाम्पल्स और बता सकते हैं? जी मैडम। हाँ, ये देखिए, हाँ अभी हमने आपको तक के लिए इस्तेमाल करना बताया, जैसे अब तक, जब तक और तब तक। अब कई बार तक शब्द सुविधा के अनुसार भी बनता है, जैसे जहां तक, जहां, तहां,
तो जहां रेखा कैसे बनती है, लाइन से ऊपर और तहां रेखा लाइन पर। अब जहां तक है तो उस स्थिति में आप पूरा बनाएंगे, जहां तक और तहां तक, ये लाइन से ऊपर जो ये लाइन पर। तो ये सुविधा के अनुसार तक शब्द पूरा भी बन जाता है, तक के लिए का रेखा भी बनती है। जैसे हमने अब तक, जब तक वगैरह बनाया था तो रेखा बनी थी, तो ऐसे ही कहीं तक, तो तब भी आपने कहीं तक। ये नियम को ध्यान में रखना है कि आपने कैसे ये आउटलाइन बनाई है। उस समय आपने ये ध्यान देना है कि हमने, जैसे आपने, आपको पहले हमने बताया था मा, रा और ला, ये 3 शब्द के पहले हा आ जाए तो हा कैसे बनता है, टिक में बने। जैसे उदाहरण दे देते हैं, हम बनाया था ना आपने, हाँ, और अब रा के साथ हार बना लो, हार, और ये बना लो हल। तो आपने कैसे बनाया था, हा का टिक और ला रेखा। तो हा को टिक में कैसे बनाया जाता है, तो इसी से बनने वाले शब्द चिन्ह भी हैं। जैसे हम में से, हम आपको बनाना आएगा तभी तो आप बनाएंगे। हम में से, अब आपने हम बनाना ये सीखा, हम में से, हम में से। तो अब इसी तरह से ही जैसे हर बनाया, अब आपने हर एक भी बना दिया, हर एक, हर बनाना सीख लिया, हर एक। तो ये नियम जब आपके क्लियर होंगे कि मा, रा, ला से पहले हा आ जाता है तो हा टिक में बनाया जाता है, तो इसी से बनने वाले शब्द भी हामी के नियम में भी आएंगे। अब एक बार आप डबलिंग का नियम भी देख लीजिए। डबलिंग का नियम नाम से स्पष्ट हो जाता है, किसी रेखा को डबल कर देना, जिसमें तरतार, दरदार और करकार, ये 6 शब्द आएंगे तो डबलिंग का नियम लागू होगा। यदि इसके लास्ट में स्वर आता है, स्वर आए, तो नियम लागू नहीं होगा, तब रेखा ही बनाई जाएगी, रेखा ही बनती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ईमानदार, इस शब्द वाक्यांश को याद रखो, शब्द को। दूसरा ईमानदारी, ये पूरा नियम क्लियर कर देगा आपको। आपने ईमानदार ऐसे बनाया, ये स्वर आ गया पूरा, तो यह नियम लागू नहीं होगा। उस स्थिति में आपने पूरी रेखा ही बनानी है। तो ये डबलिंग और हार्मिंग का नियम अपनी जगह अलग अलग नियम है। जब 4 शब्द आ जाते हैं, टा, ठा, ता और दा, तो हार्मिंग का नियम लागू होता है। जब ये 6 शब्द आ जाते हैं तो ये डबलिंग का नियम लागू हो जाता है। दोनों नियम में लास्ट में यदि स्वर आ जाता है, ये मैंने बताया है, तब वो नियम लागू नहीं होगा। जैसे आपने पत, हार्मिंग के नियम में पत और पता किया था। पत कैसे बनाया था, पा रेखा, और पता कैसे बनाया था, पूरी रेखा, क्योंकि लास्ट में स्वर आ गया। लास्ट में स्वर आने पर दोनों में से कोई भी नियम लागू नहीं होगा, तो दोनों रेखाएं ही बनाई जाएंगी। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्लियर सबको। स्वाति मैडम, आप एक बार पूछ लीजिए। यस मैम, श्योर। एनी अदर क्वेरीज मैम? एक्चुअली डबलिंग के नियम के बारे में ही लोग ज्यादा पूछ रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए। देखिए जी, हाँ, डबलिंग का नियम नाम से स्पष्ट हो जाता है, किसी रेखा को डबल कर देना, जिसमें तरतार, दरदार और करकार का योग होता है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे रही हूं। जैसे आपने सुंदर किया, पहले तो शब्द देखिए ये क्या है, ये दर शब्द आ गया, ये देखिए दर। तो आपने सा का सर्कल और ना रेखा बनाया। इसमें सारे नियम आपने क्लियर करने। सा के लिए छोटा वृत्त बनाया जाता है,
जो रेखा के शुरू में, मध्य में और अंत में बनता है। तो इसी तरह ही अंतर आ गया। अब तर तो बनना नहीं, इससे पहले आने वाली रेखा ना है तो ना को डबल कर दो। तो ये नियम जब भी आपने लिखने हैं तो इस बात का ध्यान देना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। परिभाषा क्या है? डबलिंग का मतलब है दुगना कर देना या रेखा को डबल करके लिख देना, जिसमें ये 6 शब्द लास्ट में आते हैं। अब आप देखो, ये तर आ गया, ये दर आ गया, ये अक्षर चेक करो, बाकी कोई शब्द नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई आएगा। तो आपको ये 6 शब्दों को ध्यान में रखना है। तो यदि इसी के पीछे ये स्वर आ जाए तो ये नियम लागू नहीं होगा। स्वर के आने पर रेखा ही बनाई जाएगी, तब ये नियम लागू नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। एनी अदर क्वेरीज प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। मैम स्टडी मटेरियल तो सीबीएसई वेबसाइट पे है ना? जी मैडम। तो आप जिनको भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, आप प्लीज़ सीबीएसई वेबसाइट पे जाकर स्किल यूनिट के या स्किल एजुकेशन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 11th एंड 12th दोनों का ही अवेलेबल है। और कोई क्वेरीज है प्लीज पुट अप करिए चैट बॉक्स पे। अभी मैम इज हियर विद अस। मैम आपके डबलिंग और हार्विंग दोनों के नियम के बारे में और कोई सवाल है तो आप, या फिर और कोई सवाल है जो इसके अलावा आपको मैम से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट है cbse.nic.in, इस पे मटेरियल अवेलेबल है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज पुट अप योर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। बेस्ड ऑन दिस सेशन आपके असेसमेंट्स आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको यू विल हैव टू गो थ्रू इट, यू विल हैव टू कंप्लीट इट एंड ओनली देन आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो एनी क्वेरीज अगर आपको लगता है तो आप प्लीज बताइए। मैम एक क्वेरी है, डबलिंग का नियम कब लागू होता है? देखिए बेटा, ये देखिए डबलिंग का नियम तर तार, दर दार और कर कार पर लागू होता है। I hope this answers your query, Sunita ji. If there is anything else, please do mention in the chat box. All right, I guess और कोई queries नहीं आ रही है अमरजीत मैम, तो we can call off the session. It's 12 o'clock. कोई queries आएंगी तो मैं आपको कल put up कर दूंगी. So thank you so much.
Thank you so much, Amarjeet ma'am, for finding your time for this training. इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा कोई और क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, सो थैंक यू मॉम. आप यू कैन जॉइन अस टुमारो नाउ. ओके मैडम. In the meantime, I'm putting up the attendance link again on the chat box. आप प्लीज इसे कंप्लीट कर लीजिए. अमरजीत मैम आप हो? जी मैडम. फिर से किसी का क्वेश्चन है हार्विंग का नियम, वो 6 शब्द आप एक बार फिर से अच्छे से बता दीजिए इनको. अच्छा मैडम. हार्विंग के नियम में ये 4 शब्द याद रखिए. हार्विंग के नियम में ट, ठ, त और द, ये 4 शब्द आने पर हार्विंग का नियम लागू होता है. जैसे आपने पट, पा रेखा को आधा कर देना. इसी तरह ही आपने भद, दा, ये भा रेखा को आधा करना. उसी तरह ईस्ट, ईस्ट, शा रेखा, ईस्ट. उसी तरह पथ, पा रेखा. तो ये चारों शब्द मैंने यहाँ लास्ट में देखिए सारे आ गए. हार्विंग के नियम में ये 4 व्यंजन रेखाएं आपको याद होनी चाहिए कि ट, ठ, त और दा के आने पर हार्विंग का नियम लागू होता है. इसमें रेखा की लंबाई आधी कर दी जाती है. ये देखिए पा रेखा वैसे कैसे बनता है, ऐसे बनता है. हार्विंग के नियम में यही आधा हो जाता है. ये देखिए आधा बन गया. तो ये हार्विंग का नियम है. और इस नियम में ये भी ध्यान रखना, ये रेखाएं लाइन पर या लाइन से ऊपर बनती है, लाइन से नीचे कभी नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? जब रेखा ही आधी कर देंगे तो वो लाइन पर या लाइन से ऊपर ही बनेंगी. और लास्ट में स्वर होने पर, स्वर, स्वर, तो ये नियम लागू नहीं होगा. जैसे मैंने आपको लत और लता का उदाहरण दिया था. लत में तो ला रेखा और लता में पूरा ला और ता रेखा. ये याद रखिए, स्वर के आने पर हार्विंग का नियम लागू नहीं होता, तब रेखा ही बनाई जाएगी. क्लियर? जी थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक अभी और कोई क्वेरीज नहीं है, सो वी कैन ऑल कॉल इट अ डे. जो भी शॉर्ट हैंड हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने अटेंडेंस फॉर्म्स भर Okay, there is a query in the chat box which says कि शॉर्ट हैंड हिंदी किस क्लास का सिलेबस है. तो शॉर्ट हैंड हिंदी क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है. एंड यू कैन ऑलवेज आपको अगर इसका रिटर्न मटेरियल चाहिए तो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड करना होगा. ऑल शॉर्ट एंड हिंदी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है वो अपनी अटेंडेंस फॉर्म फिल करके then they can leave. From 12:30 we have a next session on office procedures and thereafter 2:30 पे हम आपको आपका assessments form भेजेंगे.
जिसको आपको कंप्लीट करके फिर से सबमिट करना है। और रही बात, और कल आप लोग प्लीज फिर से ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ सेकेंड सेशन ऑन शॉर्ट हैंड हिंदी टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एंड असेसमेंट लिंक्स आपको आपकी मेल आईडीज पे भेजा जाएगा, तो अपनी ईमेल्स को चेक करते रहिए प्लीज, फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली आफ्टर 2:15 to 2:30 ऑनवर्ड्स। थैंक यू। यूट्यूब का जो लिंक आप लोगों को मेल आईडीज में दिया गया है, उसी मेल यूट्यूब लिंक में आपको ऑफिस प्रोसीजर्स के लिए ज्वाइन करना है।
Welcome all. Will be starting with the training for office procedures and practices. Our expert, Madam Sunita Chug, has joined. So we'll wait for a couple of more minutes so that we have little more presence in the YouTube. How many participants, ma'am, right now? Ma'am, actually they have broken up for lunch, so probably they will join in a couple of more minutes. Okay. Ma'am, background is okay. Yeah, it's fine. It's fine. Because in the office, It's okay. there are limitations. You will be anyhow be sharing your presentation, then the background will go. So, Uh, again, it has to be bilingual, as you said, no? yes. Just give me a minute. Let me check the YouTube link. We are starting at 12:30. So it's just 2 minutes more. So I'm just waiting so that more people can join in. Then we'll start. Okay, ma'am. All right, we are having a lot of people who are joining in. 12:30 is the time, still 1 minute to go. I welcome all the participants to the second round or second session and first round of office procedures and practices training. This training will be in bilingual, so I hope nobody feels left out. And again, I'm repeating, ma'am, this is for you. We have a lag of 30 to 35 seconds between Gmeet and YouTube. So I would request you to, whenever you ask questions, give them that kind of time to reply. However, you can also do one thing, that we can come back to the questions once you have asked it, and you can start with your presentation, and then we can come back to the question and we can discuss on it. Secondly, I'll be asking you to please stop after maybe 10 or 15 minutes so that I can put up any queries that are placed on the YouTube chat. So, all right, it's 12:30. Ma'am, a big welcome to you once again, and I would request you can start with your presentation. At least you can put it up. Hello, dear all participants. I know this is a post-lunch session, and post-lunch sessions are little bit slow, but I am sure this session is going to be super exciting because I have lots more stuff for you, which is going to help you in your day-to-day work, in maintaining your life better at your workplace, and also, I have certain videos with me which I will be sharing at the end of my presentation. So I'm pretty sure that you are going to love this session, and I am too also excited because this is my fraternity, my area, and you all belong to office management and secretarial practice field, which is actually I've been working since so long, so I love my field like anything. So, since I said that my session today is going to help you in today's, at your workplace a lot. Why? See, you know that now the paperless office, this concept is there. And और हम जो है पेपर और डिजिटल की ट्रांजिशन में है. 99% of our information जो भी हम काम करते हैं, that has gone through computers, and of course it has improved our efficiency by 40%. That now, since we are working with computers, we are sending mails
through computers, we are maintaining record on computers or on cloud. We are no more having, filing paper files and filing cabinets with us. And also at the same time, whenever we are, drafting any communication, locating any source of communication, we are all the time working on computers. So, as you know, that use of computers has increased a lot, and it takes, around almost many a time 7 to 8 hours sitting on the desk. So when we are sitting on the desk for such a long time, then the, clinical psychologists, industrial people, they thought of a term called ergonomics. So today we are going to talk about ergonomics, and particularly we'll be talking about the typing ergonomics. We'll be talking about the occupational overuse syndrome, what is that, and also how to practice on a numeric keypad. So let's start with our presentation. I hope everyone can see this presentation. Yes. Okay. So as I said, we are most of the time working on the computers. So while working on the computers, a lot of time is spent on sitting on the chair and looking at the computer. So we are let us first understand what is ergonomics. And if I come to my second slide, as I said, when we are talking on the working on the paperless office, so we get the peace of mind when there is no paper. This is a quote which is related to the paperless office, because everything is now inside our computer, inside our digital phone. That has become, they have become a virtual office. So this quote is just to indicate the paperless office. Now let's come to the what is ergonomics. Yes, as I said, ergonomics is the term which has come over with the digital offices and with the virtual offices. So earlier what happened, there was workplaces, there was equipment, office equipment, and people have to, the employees had to adapt with the equipment. हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था जो भी हमें टेबल चेयर वगैरह प्रोवाइड किए गए. बट नो, now it is other way around. The furniture, the workplaces, the products, and the systems, they are arranged and designed according to our needs, to fit us. We don't have to fit with the workplaces and the equipment. Now the workplaces and the systems are designed according to our needs. So ergonomics is basically to position the body in such a way so that there is no physical tiredness, there is no physical strain, there is no physical injury, and which may be caused due to repetitive moments. So that is ergonomics. Ergonomics means it's the designing of the workplaces, products, and system so that they are according to the needs of the people. So in case they are doing some repetitive work, कि कोई भी काम को बार बार कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो कि दे फील कंफर्टेबल और उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े. और वो एक at workplaces there are people who may be thin, who may be bulky, tall, small, many types, there is physique. So the system and the workplaces, the products are to be designed that it can adjust to the need of the people as they require. So that is the science of ergonomics. So it's a process of designing or arranging workplaces, products, or systems so that they fit the people who use them, or you can say it's designing a job to fit the worker. So the worker feels safer, the worker is more efficient and more comfortable at the same time performing work.
So that is the meaning of ergonomics. And if I talk about the 5 aspects of the ergonomics, so they are actually, just a moment, I'll put in a view mode. I think now it's better. Yeah, 5 aspects of ergonomics. See, when I said keep the ergonomics, when we are designing something, when we are taking care of the ergonomics, the worker should feel safe at the workplace while working, comfortable. It should be easy to use, should not be very complicated to adjust according to our needs. At the same time, it should improve our efficiency and also look good. It should be pleasing to the eyes. So when we talk about ergonomics, we take into all these aspects while designing the products, systems, procedures, or any equipment at the workplace. So as I said, we are, our people, our fraternity, our students are more concerned with typing ergonomics. See, ergonomics, as I said, कि when there is some repetitive movement, कोई भी एक repetitive movement बार बार हम जब करते हैं, तो उसके उसमें हमें करने में कंफर्ट हो, हमारे लिए एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एंड ऑल्सो दैट शुड बी सेफ. But our students, we ourselves are related with only typing, computer typing most of the time while performing office work. So here in this particular presentation, we will concentrate only on typing ergonomics. Fine, but see, repetitive movements can be at any place. Suppose one is learning a musical instrument, doing repetitive work again and again. That also will come under ergonomics. One is doing some sport. There also it's a repetitive movement again and again. So there the things to be taken care of would be of different type. But here in this presentation, we will be concentrating more on the typing ergonomics. So if I I have to explain the type ergonomics, it would be like the correct setup of the equipment, our desk equipment, and as well as our posture. Fine. If I take into account the desk equipment, that means it will be computer table, it will be computer chair, it would be your monitor, your मैम आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं. that would come. नहीं, अभी I'm on this slide only. I'm on typing ergonomics right now. Okay. Actually, there was a query on the chat box, so I placed it. Yes. Ma'am, please continue. Yeah. See, as I just said, that ergonomics is basically, designing a repetitive job so that the one who is performing, the worker, feels safe, comfortable, efficient, and also it should be very pleasing to the eye. So any repetitive moment can come under the science of ergonomics. But in this particular presentation, we would be concentrating only on the typing ergonomics. That is, we would take care of only the desk equipment and the posture which is used while typing. That means how to correctly type at a desk would be taking care of the 2 particular setups. That is how to put our desk equipment in a proper way and how to maintain our posture while typing in a proper way. So our main concentration would be, of course, on the typing ergonomics. So as I said, the typing ergonomics
if I talk about the equipment, it will cover keyboard, mouse, monitor, chair, table. And if I talk about the person, the user who is typing, then it will include the, as I said, two factors: equipment and as well as correct posture. So correct posture will include the correct posture of our elbows, wrists, fingers, neck, back, feet, eyes, and our knees. Very important. So we will be concentrating on these two particular factors of typing ergonomics, because you will see here the goal of the typing ergonomics is, of course, the purpose is to reduce the strain, the stress on the typist, on the worker, and also the wear and tear of the joints as we are typing. That's the basic goal of why should we study about typing ergonomics. Just because we want to feel comfortable, we want to reduce our strain, stress, wear, tear of our joints, and at the same time be more efficient. So again, the same thing, why should we study ergonomics? Just as I said, to avoid any type of discomfort to the body, to the joints, to our soft tissues, and also to increase our productivity. So let's come back to the first point of the posture, that is of the mouse placement. We'll of course study about the workstation also. So after this, we'll first concentrate on our posture, and then we will study about our workstation too, the right type of workstation. So if I talk about the mouse placement, I think you can see here the bottom one is the correct way of holding a mouse. So I hope you have observed that here the palm is not touching the keyboard. Ma'am, See sorry to very interrupt, clearly. but ma'am, sorry to interrupt, but the screen slides are not moving. If you're showing something new, we are still seeing only ergonomics. But you're talking No, about but I am on mouse placement, and it is no, on the sharing mode. no, ma'am, it is not I'm visible. on mouse placement. I'm on mouse placement. It is not visible. That's what everybody is saying on the chat box. Nothing is moving. But it is on the mouse placement. I'll just see. I'll share again. Sure, ma'am. Is it visible now? Ma'am, your presentation is not visible. Okay, just a moment, please. Is it now, ma'am? Yes, ma'am, it is visible, and actually, you need to. Okay, why study? This what I was saying. We were not able to see your slides earlier. You were Now not. it's okay. Yeah, we were just stuck on ergonomics. 5x space of ergonomics and all we did not see. The slides were not moving. Okay, okay, ma'am. I'll quickly explain this and we'll move further. Sure, thank you, ma'am. Yeah, this is ergonomics. As I said, ergonomics means it's the process of designing or arranging workplaces which have particularly repetitive movement, and the products and systems also say, so that they are according to the needs of the people and the people feel comfortable with them. And if I talk about the 5 aspects of the ergonomics, it is safety. The worker should feel safe, comfortable. It should be easier to use. Like we want to, adjust the height of the chair, and
then again, the process should not be so difficult. It should be easy to use, and also at the same time, it should increase our efficiency, productivity, performance, and it should look pleasing to the eye. Our workstation should be pleasing to the eye too. And as I said, ergonomics is, as basically designing a job according to the needs of the worker, and particularly those jobs which are repetitive in nature. But here in our presentation, in our class today, we will be concentrating only on the typing ergonomics. And typing ergonomics has basically two components: correct set of desk equipment, that is our, this keyboard, mouse, monitor, chair, table, or footrest. And if I talk about the posture will include the correct placement of the elbows, wrists, fingers, neck, back, feet, eyes, and also knees. That means all this. And if I'm moving to the next slide, that why we study typing ergonomics? What is actually the goal of typing ergonomics? See, the goal of the typing ergonomics is basically to reduce the strain, injuries, or any type of wear and tear which may be there by performing the repetitive job. So that is basically to make the worker comfortable. So ergonomics is basically now the first priority which is there in designing any workstation, and also to increase productivity. As I said, the second point, to reduce any strain or wear and tear, or any pain which may occur due to repetitive motion or awkward posture, and also to maintain a healthy environment. So that is why so much importance is given nowadays to the typing ergonomics. See, and the first point which comes is the mouse placement. When we are working on the computer, most of the time we are using our mouse. We are either using keyboard or mouse when working on the computer. So when you are, working with the mouse, you have to see how to hold it. See how it is being held. Of thumb, and if you can see the thumb portion, and it is coming just straight. In the first picture, you'll see in the middle that it is a little raised. This arm is little raised. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए आपकी टेबल के ऊपर. when you are working on the mouse, it should be flat on your mouse should be held like this. Because if you're working for a long time and putting your hand like this, it is, this portion is going to be painful. And also you see the keyboard. This is normally the very, very common error which is made, that your palm, it should not rest on the keyboard. It should be just above. It should be little raised around 2 inches above from the keyboard. Just see here. That's very, very important, how to work on the keyboard. So please don't rest just a moment. Don't rest your palm on the keyboard. Very, very important and very, very common error. So please ensure that when you are putting your mouse and keyboard, it should be at the same level, and your keyboard should be around 5 centimeters from the front edge. And again, this is a very common error. When we are working on the keyboard, we are putting keyboard, you see, around, around 6 to 7 to 8 centimeters away from our table edge. One has to ensure that the keyboard, it should be just
5 centimeters away from the edge of the desk or the table where you are working. It shouldn't be so far from the edge of the table. So please ensure what I said. Your palm should be little raised. The difference of the keyboard should be just approximately 5 centimeters from your edge of the table, and also the mouse and the keyboard should be at the same level. See, many a times what happens कि अभी जब हमारे जब एक कंप्यूटर टेबल के नीचे एक कीबोर्ड के लिए स्पेस होता है, तो कई बार हम कीबोर्ड तो वहां से यूज कर रहे हैं और जो माउस है वो हमने ऊपर रखा है, जहां पे उस लेवल पे रखा है जहां पे हमारा मॉनिटर है. See, again, if we have to work for long periods of time, meet some deadlines, work for 4 to 5 hours, that's going to, be very painful. We take small little things for granted, but they do affect a lot when we become just ignorant about our right way of working on the keyboard or on the mouse. So we need to teach our students from the beginning itself so that they form a habit of using the mouse and the keyboard in the correct way, because many of the students are not able to have speed just because when they are typing they are putting their palm at the edge of the keyboard, so they are not able to move their fingers very speedily. So it has to be little raised, around 2 to 3 inches. It has to be little raised. It's very, very important. This again picture will show you that how to put your fingers on the keyboard. That it should be above the level of the keys, and also your fingers should be curved. Your fingers should not be like straight. They have to be curved when you are working on touch typing way, when you're working in the touch method. Fine. And your thumb should be hanging near the space bar, because every time you are using the space bar with the thumb, so your both the thumbs should be on the space bar. So whenever you want to use it very swiftly. And your wrists, your wrists should be floating above and parallel to the keyboard, and they should be tucked to your body. They should not be like hanging loose. They should be tucked to your body. I'll show you again the correct complete picture also, how in a next slide. So if we're going to talk about the monitor placement, see, we have to look to the monitor most of the time. So when we are looking at the monitor, our head, the position of our head, shoulders, eyes, it will affect a lot if we've not put the monitor properly, or our, on one side it is being put, then again there may be neck injuries or the pain in the neck. So monitor placement is very important. Uh, in case if there is a question, how far should we monitor from your eyes? So the ideal the distance, you can say the average distance is 15 to 30 inches. So 15 to 30 inches is 15 to 30 inches. Ma'am? Yes. Can you please increase the size of your slides? There is a slide show Yeah. icon. No, no, not here. Go down. Go down your screen. At the bottom, you will see the size where you can increase or decrease the size. Yeah. Yeah, there on the left hand side. No, no, no. On the left hand side, there is a cup. Left. Mine left. Your maybe left also. Please take your cursor to that on the right. There is a small cup. Shall I go by this? Is it okay? Ma'am, let me check on the YouTube because they are finding it very small, so they are not able to see it. Is Okay. it now?
Um, you can completely increase the size by clicking on this icon. You know, slideshow. Not on the top, it is in the top. Can I see your cursor? Yeah, just a moment. Yeah, Where you had, increase and decrease the size of the slide, just next to it, just a there is a minute. small, I will. I'll do it. slideshow button. Size. Ma'am, is it not clear now? It to me it is, but when I'm reading the comments, then it's okay. Probably when the smaller pictures come, then they go blur. Yeah, maybe, ma'am. I'll try. Otherwise, there is a slideshow button which increases completely, increases the size of the slides. At the bottom, no. Don't increase the size of the slides. Yeah, I've got it. Here it is actually. Size. Should we, ma'am, carry on? Yeah, sure, ma'am, please. I know. I And we are also pinning the screen. If this is the best you can come to, then it's okay. We are also pinning the screen on YouTube. You please continue. yeah. Uh, yes, please. As I just said, we need to keep while typing, we need to keep our, that this palm little raised away. Our fingers have to be, and it should be like this. It should not be like this. See, when most of the students, when they are typing like this. It has not to be like this. It has to be like this. No, this has to be little raised up. So please ensure that from the beginning itself, when the students are learning, they are able to learn in the correct way, and this way they will form a habit that they will never go for wrong typing, putting the hands on the keyboard in a wrong way, and also holding the mouse in a proper way. This again slide shows that how the curved fingertips should be there on the keyboard, and the thumb always on the space bar, and your wrists should always be, they should be floating and above, and it should be parallel to the keyboard. You'll see that in the next slide. I'll show you. Yes, let's come to monitor placement. I'll show you a complete picture which will show all these, parameters of the equipment placement. Uh, that would be just at the end. Let's take one by one now. And if I talk about the monitor placement, that monitor, is the most of the time we are looking at the monitor while working. So the ideal distance between the worker or the typist and the monitor is 15 to 30 inches. But see, again, then size of the monitor varies. Sometimes you're working on 18 inches, 13 inches. So you can also keep this in mind, that when you are working on 18 inches of the monitor, the ideal distance between the monitor and your eye level should be 18 inches. If you're working on a monitor which has screen of 30 inches, then the ideal distance between the eye level and the monitor will be 30. So 15 to 30 inches is the average
distance, that the monitor should be far from the eyes, but you can take into account also according to the size of your monitor. So the size of the monitor and the distance between your eye level and the monitor should be same. That is, has been found by the people who are working on the correct ergonomics, that that's the ideal distance which would be, comfortable for the eyes. And also, and the angle of the eyes should be just, it should be straight, and it should not be like your monitor is placed more on the left hand side or on the right hand side. Your eye level should be such that it should be at the top of your monitor level. And also, when you are working on the monitor placement, you should see that there is no glare. That screen should not have a very glaring effect. So that also is very important to take care when you are working on the monitor. And again, the elbow placement, as I said, when you are working, your elbow should be just tucked to your body. It should not be like, loose like this, as if it should not be like hanging. It should be tucked to your body. And this angle should be, this angle when you are typing, it should be 90-degree. Arm should be bent and an angle of 90-degree to use the keyboard. If you're working for a long time on the keyboard, typing a report which may take 2 hours or 3 hours, then, for a comfortable and the, very safe posture would be that this should be at the angle of 90-degree. This 90-degree angle should be there. Fine. Then again, you have to see that, as I said, elbow should be tucked. और ऐसा नहीं हो कि जब हम कभी टाइप करते हैं तो अपने एल्बोज को टेबल पे रख देते हैं, and you are from one hand, you are typing many a times, you're using 2 fingers and keeping the other arm on the table. No, your other arm should be resting on the keyboard, because many times you will be working on the keyboards with the touch method. Then again, as I said, adjust the height of the table and chair according to your need, according to your height. And also see here in the next picture, the position of the feet. Your feet should be flat on the floor. Ma'am, your slides are not moving, please. Please see that. We are still stuck on. Slides are not moving. You're not able to see now posture? Posture is visible now. See, this is the correct posture. Here you can see the position of the feet particularly. They are just flat on the floor. The right hand posture, which you can see how the back is slouchy, how the feet are going too far. It should not be like this. The correct posture is your back should be straight, your feet should be just at the ground, and also to see the level of the chair. Fine. Here you have to see that the back should fully touch the chair. See, when the chair is ergonomically, made, ergonomically designed, the back should be such that it will touch the back support of the chair will touch your back, giving you a comfortable, back. And also it will not be very painful when you will work for a long period of time. It will not lead to any, lumbar spondylitis. Your lower back will not be hurt. It will give you a support if the chair is ergonomically designed. But if the chair is ergonomically designed and you are not putting a correct push, in this particular picture, the chair is same, but the person who is sitting is not sitting in the correct way. So along with the equipment,
how you maintain your posture is equally important. See, this is the complete picture which is showing your workstation and also the complete picture. See, in your assessment test, we're going to ask you questions that what should be the distance between the monitor and eye level, what should be the angle of your arms and elbows. You can see here the straight, and also what should be the your height of the chair or table, how you should keep your fingers on the keyboard. This all will be there. You can see here the distance, how particularly the back is being touched. The back of the typist is touching the backrest of the chair, and also the position of thighs, which is just parallel to the floor. See the position of the thighs here. That is also very important, because with this particular posture, even if you are working for long periods of time, at least it's not going to hurt you. It's not going to cause you pain so easily. See, that is the correct sitting posture. Now, if I talk about what common typing ergonomics we make, as we said, कि when we lean our hand or wrist so much, leaning our hand, अगर हम अपना जो हाथ है, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल टच करते हैं, जो कीबोर्ड का जो एज है उसमें टच करके हम टाइप करते हैं. सो व्हेन वी आर टाइपिंग, तो दैट इज गोइंग टू stretch our nerve a lot. It's going to hurt this portion a lot, and it will cause you carpal tunnel. It's a very, very common syndrome, very common problem, which comes with wrong posture of our hands. I have a complete slide on carpal tunnel, and I will discuss that in detail. But that's a very, very common problem which comes with improper placement of hands while typing. Very, very common. So when you are working without any breaks, see, the ideal formula or the ideal way is 30-30. That means if you are working for 30 minutes, keep your eyes off for 30 seconds at a far away place. कहीं दूर देखो 30 seconds के लिए. 30 seconds to max 1 minute. Then you can come again on your work. So usually it is 30-30 rule. So wrong ergonomics is again a badly placed mouse, or when you are working on the keyboard, you are putting too much pressure, which is actually not required. We all know that we need a feather touch when you are working on the computer keyboard. We are not working now on the manual typewriters. We don't have to press too hard. Pressing too hard may cause pain if you are repeatedly working for a long periods. Again, as I said, if we are working for a long periods, then there may be certain injuries, there may be certain pains, there will be some musculoskeletal problems which may come, and that particular name which has come due to repetitive movements is actually called occupational overuse syndrome. So OOS is actually occupational overuse, which comes from the repetitive movements. When we do something again and again, or maintain very awkward posture, then we may fall with the occupational overuse syndrome, and it is also called RSI. RSI is basically repetitive strain injury. Occupational overuse syndrome is also called
repetitive strain injury, or it is sometimes also called gradual process injury. There may be many names, but yes, occupational overuse syndrome is the most commonly word used when we are not taking care of our postures while typing and maintaining them, maintaining the wrong postures, maintaining the wrong way of typing, holding mouse, sitting on the chair, or keep placing monitor not in a proper way. That syndrome is called occupational overuse syndrome. Again, I said it is caused by the awkward posture, just as I said, repetitive movement, prolonged muscle tension. कि अगर आपने जो है, जैसे कि मैंने बोला कि आप गलत तरीके से इसको पकड़ेंगे, अब कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, तो यहाँ पर जो मसल टेंशन होती है, मसल पुल होती है, बहुत दिन तक आप ऐसे करते रहे, then there will be condition of occupational overuse syndrome. या कुछ जब आप कुछ you are able to see some vibrations which are coming from your this printer, or certain vibrations which are coming especially for long periods of time. They may hurt you, they may cause you headache, they may strain your ears a lot. Then again, occupational overuse syndrome is also called by the wrong design of the equipment. See, you know that डाइनिंग टेबल टाइप ऑफ चेयर हमें ऑफिस में मिल जाए टाइपिंग करने के लिए, तो दैट वुड नॉट बी कंफर्टेबल, because that would be the poor design of the equipment, because you are not able to sit there for a long time. That is meant for different purpose dining chair. And again, अगर डाइनिंग चेयर के ऊपर हमें हमारी कंप्यूटर चेयर के ऊपर बैठ के अगर हमें खाना खाना हो, तो अगेन दैट वुड नॉट बी अ suitable type of furniture. So the poor design or arrangement of equipment which is there in the office at the time of typing may also lead to occupational overuse. It may also lead to pains or muscle tension, or any type of other problems which may come with the health. And again, sometimes you have poor work practices. आपने properly time managed नहीं किया. You had 8 hours to complete the report. You wasted the time for 5 hours, and for 3 hours you are working without any breaks and not taking care of any ergonomics, proper ergonomics. Then again, it's going to cause you pain, or it's going to cause health problems. And also the lack of training. Lack of training here means that nobody told you how to use properly these equipment. What should be the ideal distance? What should be the ideal way of working? What is the ideal way of putting our fingers on the keyboard, or putting our arms, or putting our feet on the floor? Nobody told us about all these things earlier. So these all we are doing on our own. किसी ने हमें ट्रेन नहीं किया, हम अपनी मर्जी से बैठ गए करने के लिए काम. तो हम किसी को कुछ अच्छा लग रहा है सिटिंग पोस्चर, किसी को कोई कंफर्टेबल लग रहा है, दैट may look comfortable in the beginning, but the wrong postures or the wrong way of working, if they are prolonged up for a long period of time, then they may cause occupational overuse syndrome. That is the pain in the back, the pain in the wrist, hands, हाथों में दर्द हो जाएगा, या अगर हमारे हाथ पैर जो है प्रॉपर तरीके से फ्लोर पे टच नहीं कर रहे हैं, तो हमारी नीज में दर्द हो जाएगा. एल्बोज का एंगल ठीक नहीं है, तो एल्बोज में दर्द हो सकता है. नेक में आई स्ट्रेन, द मॉनिटर एंड द आईज आर नॉट एट द सेम लेवल, the edge of the monitor and the eye are not at the same level, then again it may cause eye strain. So there may be many type of injuries which are related to the typing. When we are using it for a prolonged period of time, we are typing for a long period of time,
and we are not taking care of any, ergonomics principles, then it may cause us over occupational overuse syndrome. And with that syndrome, you can see, parts of the body injured. There may be possibility of injury in all these parts of your body. Ma'am, can we have some questions now? Once, yeah, ma'am, yeah, ma'am. All right. So, Abid, you can also have some water, and then I can ask. Okay, there is a question. What is RIS? So you have told it, but No, it is no, ma'am. It is not RIS. It is actually RSI, repetitive strain injury. all right. Okay, thank you. Probably Tanisha, your question is answered. There's another from Poonam Chauhan. She's asking, कंप्यूटर चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए? See, जो अभी computer chair की height, I'll show you. See here. You can see here the computer chair's height is basically, as I said, we have people, who have different types of the height of the people, maybe may vary at a workplace. So the chair has to be adjustable. But ideally, commonly, the chair is between, 38 to 55 centimeters is the chair, and 72 to 75 centimeters, that is, 30 inches is the table. 72 to 75 centimeters is the ideal height of table which is there. And then chair has to be adjustable, but commonly the height which is there at the workplace is 38 to 55 centimeters. All right. Thank you, ma'am. And I would request the participants to put up their queries on the chat box, since probably one part of the Yes, ma'am. presentation is almost over. So participants may please put up their queries on the chat box so that I can place it with the expert. As of now, there are no more questions. So, ma'am, you can continue, but I will ask you to please stop after 10-15 minutes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Please continue. Yeah. See, I was talking about occupational overuse syndrome, which is caused by the repetitive movements at the workplace. So basically, the overuse syndrome is there when there is, improper postures, the wrong type of workstation. So, because of these two reasons, you may have occupational overuse syndrome, and as a result of that syndrome, your different body parts which are involved in the repetitive movement can be injured. And if we're into typing work, then these are the parts which may get hurt, which may get, pain due to prolonged use. And you see, initially when you're working, you may not feel any discomfort, but overuse at the work due to wrong posture or workstation may cause you muscle weakness. Initially, you may not find anything, but you are working for a long periods, so suddenly you will find that your muscles have become weak. आप पहले 3 घंटे लगातार टाइपिंग करते थे, अब आप ये देख रहे हो कि 1 घंटे में ही आपको पेन होना शुरू हो गया, बिकॉज यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ द करेक्ट एर्गोनॉमिक्स इनिशियली. पहले से ही अगर हम ध्यान रखते तो ये मसल वीकनेस का सिम्टम आता ही नहीं. And also you may have certain pains, certain, hot or cold feelings, flashes, कभी कभी एकदम पसीना आ जाता है, या मसल टाइटनेस और स्पाज, स्पाज होते हैं जब जकड़न हो जाती है, आपको लगता है कि कुछ डिस्कम्फर्ट है, कुछ ऐंठन सी हो रही है हमारे हाथों में, कुछ जकड़न सी हो रही है, तो या कुछ हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं, नमनेंस हो रही है. सो दीज
और या आपका हाथ पूरी तरह से मुड़ नहीं रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रेंज, सो और या जल्दी थक रहे हैं, आपका मॉनिटर और आई लेवल में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है, तो आपका लगातार मॉनिटर को देख के हेडेक हो गया और अब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही हैं. And of course, we'll talk about the carpal tunnel syndrome. So there may be certain, symptoms which you can see after a prolonged use of the repetitive movement if not taken care of proper ergonomics. प्रॉपर ergonomics का ध्यान नहीं रखा है तो लगातार काम करते हुए आपको धीरे 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 ये symptoms दिखाई देने लगते हैं when you are working. So we need to prevent all of this. We all know prevention is of course better than cure. Everybody knows that, everyone. So why to let the symptoms show in our body. पहले से ही हम अगर अपने ध्यान रखें अपने ergonomics का, see, taking care of the workstation is the responsibility of our office, and offices have become, they are very cautious. They are actually taking care of our workstations. तो जब भी एक ऑफिस के अंदर जब कोई भी फर्नीचर, कंप्यूटर फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो of course this aspect of proper ergonomics is taken care of. Rather, the manufacturers have taken it very seriously now. वो बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर एक टाइपिस्ट को बहुत देर तक बैठना है एक चेयर के ऊपर, तो जो उसका जो सीट है इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, उसका जो कुशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बैक का एंगल कितना होना चाहिए और उसमें आर्म रेस्ट के लिए कितना हाइट होना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मैन्युफैक्चरर्स, and our offices are of course buying the ergonomic workstations, but we need to have the proper posture. That is our responsibility. That comes into our own, that for that we have to take care of our mindset, that yes, we need to take care of the proper sitting postures. That is our responsibility. So when you don't want to have the occupational overuse syndrome, or you want that those symptoms of overuse are seen in your body, then you have to see that you must have you must organize your deadlines. You must schedule frequent rest breaks. I said कि 30-30 rule कि 30 minutes तक हमने टाइपिंग किया है तो सिर्फ 1 minute 30 seconds to 1 minute जो है मैक्सिमम हम ब्रेक ले सकते हैं sitting at the same place. And also see if some symptom is seen initially in my body कि मुझे लग रहा है कि मेरे हाथों में पेन हो रहा है, तो मुझे तब भी मैं टाइप करते जा रही हूँ, तो दैट मीन्स you are going to see the severe symptoms soon. अगर पहले स्टार्टिंग ही हो रही है आपकी ये सिम्टम्स की, रेपिटेटिव ओवरयूज की, कुछ इंजरीज की कुछ स्टार्टिंग हो रही है, मुझे लगता है कि माय आईज आर स्ट्रेनिंग टू मच, तो आई मस्ट गो एंड check it from some eye specialist and use glasses or whatever. And if I think so you must stop those activities if you're feeling some and take care how to resolve that discomfort. Maintain the correct posture, as we said, the proper arms, elbows, feet, your how to keep your thighs in a proper way, your back, you have to maintain the correct posture. And also you don't have to hit the keys very harder. It will of course also not damage your equipment at the same time. And also you have to maintain a good level of general fitness. Sometimes we know that we all need to take care of our bodies for muscle fitness particularly. If we have to ensure our good efficiency level at all times, we must take care of our bodies, and you have to manage your stress level.
You don't, it should not be like, even if you are putting your proper posture and you have lots of stress, then your posture is of course going to be faulty. मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ there is some tension, so of course I'm going to put my arm on the table because I am stressed. Even during even while working, I would be not aware consciously about my posture. So you have to manage your stress levels to have the correct typing ergonomics, and also you have to avoid prolonged repetitive movement or activity. आपको लगता है कि बहुत ही severe pain हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है रही, तो you have to maybe for 1 or 2 days till you come to your good level of health. You have to avoid that activity. And also you see, you have to take care of all these symptoms जब आपको इनिशियली लगता है कि ये कंडीशन आ रही है. ऐसा नहीं कि ये जब कंडीशन प्रोग्रेस हो गई है, बहुत ज्यादा सिवियर हो गई है, तब आप उसको ठीक करें. आप इनिशियल लेवल्स पर ही अपना जो पेन्स है या जो सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं उसका ध्यान रखें, और उसका you take care of those. You don't, they should not be aggravated, that condition, their symptoms. And as I said, practice the 30-30 rule. So it can be 20 to 30, it can be 20 minutes. Look for, after 20 minutes, look for, keep your eyes away from the monitor for 20 seconds, or after 30 minutes as you feel fine. That again comes, depends on the individual. 20 to 30 minutes it is usually called. And also for a good workstation, it's important that you should have proper lighting. The eye strain may be also because of the improper lighting at your workplace. Improper lighting or say ventilation, they may cause headache even if there is a proper workstation, proper posture. Again, lighting and ventilation are two again very important factors for a ergonomic workplace. See, in case you have some, you have developed, you didn't take care initially the symptoms of the OOS, occupational overuse syndrome, then you situation has gone out of the hand. Then of course you have to take care. Usually it happens, that's our human nature. We keep on postponing the things. So once you have postponed after a long time, or आपने ध्यान नहीं दिया, तो then it's not a very, occupational overuse syndrome is not a very you can say serious disease. It's not a disease, it's a condition. It's not a disease, it's a condition which can be corrected with taking a very small steps. So don't worry about such a big name. So you have to take care of just simple things, and this can be corrected. It's not a disease. So once you think that you have pain in your shoulders or your arms or your back, then it may be possible that for some time under the supervision of the doctor you have to take some painkillers, or you may have, usually so it goes through exercises. Usually when you are having exercises, I will show you certain exercises also at the end, in the next slide, that how these exercises can be done once you have developed certain symptoms of pain in the hand or shoulders. Before we go to those exercises, the one very common problem which comes with the wrong placement of fingers on the keyboard is carpal tunnel syndrome. Very common problem. I will show you a picture also of this. Just a moment.
See, this is when you are see when you are having you're working on the keyboard for a long period of time, particularly where it shows your median nerve or your hand, these areas of your these areas of your fingers and the palm, they get hurt. There is pain there, and you are not able to lift weights after a long period of time. आप वेट नहीं उठा सकते हो, आपको दिक्कत होती है काम करने में, फिंगर्स दोबारा टाइप करने में. सॉरी, जस्ट मोमेंट. Yes, please. So, in carpal tunnel syndrome, basically, when you are putting wrong way, you are touching all the time your palms on the edge of your keyboard. Then there is a pressure here, particularly here. See, and repeated, बहुत टाइम तक आप ऐसे ही करते जा रहे हैं, तो एक कार्पल टनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है आपके रिस्ट के अंदर. एंड हियर द नर्व्स दे स्टार्ट स्वेलिंग, या स्क्वीज हो जाती हैं या स्वेल हो जाती हैं. एंड you will find that you have pain here most of the time. आप कुछ वेट नहीं उठा सकते, आपका कुछ जो भी यू आर नॉट एबल टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम. आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जकड़न हो रही है, नम हाथ हो रहे हैं, और आपकी ग्रिप कम हो रही है, और आपको कुछ पिन्स और नीडल्स की चुभने का जैसी फीलिंग होती है. So that this is a very, very common problem which comes with the putting your hands wrongly, particularly your palms and your fingers not in a proper position on the keyboard. So we need to teach all this from the beginning itself. Yes, see, but again, it's not कि जब भी आपने टाइपिंग की तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम ही होगा. इट मे नॉट बी ऑल्सो, दैट इज टू बी शोन टू द डॉक्टर कि एग्जैक्टली क्या है, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पेन हो रहा है तो कार्पल टनल सिंड्रोम ही होगा. दैट नीड्स टू बी particularly diagnosed by the doctor. But yes, most of the time it is carpal tunnel, but not every time. And also those who are working on computers, उनके यहाँ पर elbows जो हैं वो दर्द करने लगते हैं. They are not put on the right angle, properly loose तरीके से, या टेबल पे रखकर हम टाइपिंग कर रहे हैं. प्रॉपर हमने जो हमारा कीबोर्ड का एज है वो टेबल के एज से प्रॉपरली डिस्टेंस पे नहीं है, तो it puts a pressure on the elbows. So one may have a condition, a pain which is called tennis elbow. So these are the common problems which come. Carpal tunnel syndrome and tennis elbow are the most common, but again there can be lumbar spondylitis with the wrong posture, with the wrong back placement. There may be problem with the knees. अब आपने पैर को क्रॉस करके बैठे हैं, बहुत देर तक टाइपिंग कर रहे हैं, देयर मे बी प्रॉब्लम इन द नीज ऑल्सो, और देयर मे बी प्रॉब्लम इन द फिंगर टिप्स, यहाँ नमनेस हो सकती है. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल दैट because we of course need to type for a long periods of time. That cannot be avoided. That's a part of our work. If we are stenographers, secretaries, we are personal assistants, executive assistants, we need to work on the computers. We need to look for our mails, we need to file our papers, we need to type reports.
draft letters, we have to work on the computers for a long period of times. That cannot be avoided. But yes, we can all the time avoid the these syndromes, these problems from appearing in our body. And this can, I mean, you have to just be a little conscious. You have to work cautiously, and you have to see that at the time of typing, our postures are the most appropriate ones from the beginning itself, and so that they becomes a part of our habit when we are when sitting. Initially one has to take care of it quite cautiously. Cautious effort is to be done from initially, but once it is done for a few days, it becomes a part of the habit, and you can avoid all these symptoms from appearing in your body and feel relaxed. Before we go to the next part, that is use of numeric keypad, any questions, please? Yeah, sure, ma'am. I'm going through the chats. Okay. So, there is one person who has requested for a graphic arrangement of chamber of coordinator. So, if that is available with us, we can definitely show. Otherwise, But you can. ma'am, this is a government office. I cannot share it, ma'am. No, no, graphic in the sense anything that is there on the in the books. If there is ever a graphic that is placed in the book, they may we can share it, but not as of now. If it is not there as a part of your presentation, then it's okay. Um, Let me see if I can see some other question. Not as now. Um, okay, there is a question you have already said that in your presentation. How much distance we have to maintain for computer and screen? Actually, it has to be, ideally, or the average distance is 15 to 30 inches. Your between your eye level and the monitor edge. But see, because you have then different types of monitor, different sizes of monitors, then you can also take into account that the size of the monitor and the distance of the monitor and your eye level, the distance between the monitor and the eye level should be same as that of size of the monitor. That can also be taken into consideration. But yes, on average, it is 15 to 30 inches, the distance. All right. So, thank you, ma'am. There aren't any more questions, so you can continue, please. Okay, ma'am. Ma'am, before I go to my next numeric keypad, can I ask one question to the audience? Sure, sure, definitely. Can they tell me what are the guide keys on the computer keyboard? You need to repeat it once again. Uh, what are the guide keys? Guide keys. Okay. GUIDE, guide keys on a computer keyboard. Okay. So, since there is a lag, we need to wait for some time. There is a question: is it same rules of sitting arrangement and hand posture for typing in typewriter or computer? No, no. My question is, No, what ma'am, are? there is a question on the chat box. So till the time the answers don't come, you can, if you Okay, can ask. okay. Ma'am, could you please repeat the question? Yeah. Is it same rules of sitting arrangement and hand posture for typing in typewriter or computers? No, ma'am, because when we are working on typewriters, we don't have that, that equipment. For computer typing, we are having a different type of equipment with us. And when we are working on the
manual typewriter, we have the different type of workstations. All Since the right. workstations are different, number one. Number two, with the this manual typewriter, we don't have the mouse with Hmm. us. Yes. We don't have the, see, the monitor height is not, monitor height is different, the typewriter height is different, so it cannot be the same posture. Okay. All right. So we have some answers. Pooja ji is saying it is one. Just a second. Okay. So Pooja Gaur is saying 104. Anu Krishna is saying JF. Um, okay. Some people want you to repeat the question if you can, please. What are the guide keys? Okay. See, on Ma'am, there are more guide, answers. There are more answers. Pooja Gaur is saying 10 keys. Tanisha is saying up arrow keys. Tanisha Chopra is saying down arrow keys. Mantosh Kumar is saying, I don't know. Amna is saying shift, enter, space, arrow. Priyanka, ma'am, yeah. tell them that guide keys are present on the home row. So they need to tell now. Ma'am, they can hear you also. Yeah. See, friends, my question is, what are the guide keys on the home row? Even if I say what are the guide keys, that is one and the same thing. But I'm giving a clue that what are the guide keys which are there on the home rows. Home rows is a clue. All right. So Shazia is saying F and J are guide keys for left and right. Sukanya Reddy is saying F. Mantosh Kumar is saying types. Prem Kumar is saying F and J. Rajeshwari is saying function keys are the guide keys. Priyanka Sharma is saying space bar, enter keys. Mantosh is saying save, C. Hero Money Singh is saying F and J. Tanisha is saying space bar, enter keys. Yes, ma'am. Lucy is saying Yes, F1. So yes. there are a lot of answers coming. Everybody Yeah, wants yeah. to answer. Yeah, dear friends, those who have said F and J are perfectly right. Perfectly right. Great. See, actually, guide keys, you know what are guide keys, of course. When we had manual typewriter, we had A and semicolon as the guide keys. A for this and semicolon for this. You know that these two are guide keys because they are guiding our other fingers to place them on the home row. Fine. The A and semicolon were the guide keys. That means our pinky finger was the guide key on the manual keyboard. So when we've shifted to the computer keyboard, now our guide keys are F for the left hand and J for the right hand. Those who have said F and J are perfectly right because these two particular keys have a raised bar. आपने देखा होगा इस पे एक साइन बना है raised. So when we are placing these, fingers, our pointer fingers on these two keys, they are helping our other fingers to put on the home row. The purpose of the guide key is to guide the other fingers to place correctly on the home row. So F and J, since they have some, they give us tactile feel, touch feel से हमें पता चल जाएगा कि हमने बिल्कुल ठीक रखा है अपना जो पॉइंटर फिंगर है, ठीक कीज पे रखा है. तो अगर वो दोनों कीज को ठीक जगह पे रखा है तो हमारी जो रेस्पेक्टिव फिंगर्स है वो होम रो पर करेक्टली प्लेस्ड है. So F and J is the correct. See, the same way we have, we have guide keys for numeric keypad too. See, here you will see that which is the guide key here. Can anybody tell me on the numeric keypad which is the guide key?
Okay, so Anyone? please put up your answers on the YouTube chat box. Ma'am, it will take at least 40 to 50 seconds lag. On So, the numeric keypad, which is the guide key, the same way as we have on the keyboard guide keys, we also have a guide key on the numeric keypad. there is an answer. Priyanka ji has said 5. Prem ji has said 5. And everybody is putting that number only. 5. Yes, they are right. They Yes, are right. madam, they are right. Yes. See, you are all right that 5 is the guide key for the numeric keypad. So, in numeric keypad also we have a home row. As we have the home row in our normal keyboard, same way we have a home row in the numeric keypad too. So when we are placing our fingers on the keypad, we are placing first our middle finger on 5, and then it is guiding our pointer finger and the ring finger to place on the 4 and 6. So when अगर हमें ये लर्न करना है न्यूमेरिक कीपैड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम रो प्रैक्टिस करनी है. और होम रो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो 5 हमारा गाइड की है उस पर अपना मिडिल फिंगर रखना है, और उसके बाद रेस्पेक्टिवली हमें पता चल जाएगा कि 5 अगर ठीक प्लेस्ड है तो इसका मतलब है कि 4 और 6 भी ठीक प्लेस्ड है. सो व्हेन प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिक कीपैड, we will always be typing 4 with our pointer finger, 5 with our middle finger, and 6 with our ring finger. So सबसे पहले जब हम न्यूमेरिक कीपैड प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक अपनी एक्सरसाइजेस बना सकते हैं. ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यू कैन राइट द नंबर्स 4 5 6 4 5 5 6 5 4 5 4 6, सिर्फ वही 3 नंबर्स जो कि सिर्फ इसी रो से बने हैं. सो वी कैन लुक एट आवर एक्सरसाइज शीट जो अभी हमने बनाई है जिसपे नंबर्स लिखे हैं, और उसको देखते हुए विद द टच टाइपिंग वी कैन यूज द न्यूमेरिक कीपैड. सो वंस एंड विद द राइट एंड थंब यू आर यूजिंग द 0. On the numeric keypad, if one has to gain speed, the 4 5 6 is the home row, and with the right hand thumb you are pressing 0, and with the pinky finger, the small finger, you are using enter. So once you have done the practice of the home row, then you come to the upper row, that is of the 7 8 9 on the numeric keypad. Because for all the jobs where the data entry is done, data entry operator, and where lots of one is suppose our students, they may go for jobs in retail industry or any in accounts where lots of data is to be typed, then it's very important to have a speed on the numeric keypad. So at least if it's a part of curriculum, it's right. If it's not, please tell them the finger placement on the numeric keypad. Once they know the finger placement, they can do practice. Because what many people are doing, they are just using one finger to type. Of course, using one finger to gain speed and using all the fingers to gain speed, there's lots of difference between the two. So at least being the teachers in this field, we can tell them the correct finger placement on the numeric keypad. So as I said कि 4 5 6 में हमको किन किन फिंगर्स के साथ में हमको पर्टिकुलर अलॉटेड है न्यूमेरिक कीपैड पर. उसके बाद में जब हमारी इस पर्टिकुलर होम रो की प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि हम कीबोर्ड में भी सबसे पहले होम रो की प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन वी कम टू द अपर row. The same way here we will come back to the upper row for secondly, और उसके ऊपर जो 7 8 9 है, जो 7 अगेन जिससे हम 4 को प्रेस किया था पॉइंटर फिंगर से, उसी से हम 7 प्रेस करेंगे. जिससे हमने 5 प्रेस किया था उससे 8 प्रेस करेंगे. जिससे हमने 6 रिंग फिंगर को जिसने टाइप किया था उसी से 9. So what we are doing,
we are keeping our fingers all the time on 4, 5, 6. Our middle finger is typing 8 and it's coming back on 5 again. Our pointer finger is typing 7. It will come back on again on the home keys. Type 9 and come back, type 9 and again come back to 6. So our fingers will always rest on the home row. After typing the respective number with the allotted finger, we'll come back to the home rows, home keys. Fine. Once that up, you can again have your own worksheets for the top row practice. You can write your numbers yourself, which will consist of home row and as well as of the top row. You can have 4, 7, 5, 9, 6, 8, 9, 5. You can have different, you can prepare worksheets so that the students gain mastery of the upper row and along with the home row. By the touch only, they should be able to type and come back to the respective home key. Once that upper row is done, thorough practice with, come back to the bottom row, 1, 2, 3. Again, the pointer finger will be used to type 1, the middle finger would be used to type 2, and the ring finger would be used to type 3. And again, after, अगर हमने 5 टाइप किया है तो बाकी हमारी फिंगर्स 4 और 6 पे ही रहेंगी, बाकी दोनों फिंगर्स. और अगर हमने 2 टाइप करना है तो हमारी मिडिल फिंगर में 2 टाइप करके इट विल कम बैक अगेन ऑन द 5. So this way is the finger placement, and with the pinky finger, the small finger, you are going to type the plus sign, the enter sign, and also the minus. And with the right hand thumb, you are going to use the space bar or insert, or you are going to type 0. 0 and the 0 is typed with the right hand thumb. Fine. So 4, 5, 6, 1, 2, 3, and 7, 5, 6. The same fingers are allotted, but your fingers will always rest on the home keys. And the pinky finger, I'll once again say, it will be typing the minus, plus, and the enter. Ma'am, any questions on this? Yes. On the finger allocation on the numeric keypad. Any questions, please? Yeah, let me check the YouTube chat, ma'am. As of now, there is a person who is saying कृपया होम के बारे में बताएं. होम कीज के बारे में. हाँ, होम कीज के बारे में. Okay. See, home keys are actually those keys where our fingers will always rest while typing. जैसे कि अब हम कहीं भी जाते हैं घर से बाहर तो वापस हमने घर में ही आना है. कहीं भी जाएं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, we'll come back to our home, because home is the place which is of where we are staying permanently. So the same way, we have a home row जहां पर हमारी फिंगर्स जो है दे विल बी रेस्टिंग देयर ओनली, वहीं पर ही फिंगर्स रहेंगी. कुछ भी और ऊपर वाली रो में टाइप करें, नीचे वाली रो में टाइप करें, तो वो रेस्पेक्टिव की को टाइप करने के बाद हमारी फिंगर फिर उस होम रो पर आ जाएगी वापस. एंड होम रो कंसिस्ट्स ऑफ 4, 5, 6 ऑन ए न्यूमेरिक कीपैड. और एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड, उसके अंदर ASDF, they are the home keys for the left hand, and semicolon LKJ, semicolon LKJ they are the home keys for the right hand. So हम ऊपर की रो में कुछ टाइप कर रहे हैं, उसके बाद में सपोज मुझे अगर W टाइप करना है, W is allotted, for the ring finger is allotted for the W. I will type W, go to the upper row, my finger will go to the upper row, but it will come back again on the S, because S is there on the home row.
तो कहीं से कुछ भी टाइप करने के बाद में ऊपर वाली रो में, नीचे वाली रो में, लेफ्ट राइट, our fingers will come back again on the home row. And on the home row we have home keys and as well as guide keys. Guide keys help us to keep our fingers correctly on the home row. And if I talk about numeric keypad, 4 5 6 is the home row, क्योंकि आप चाहे ऊपर टाइप करें 7 8 9 या नीचे टाइप करें, आप वापस अपने फिंगर्स को 4 5 6 पर ही रखेंगे, हमेशा प्लेस वहीं करेंगे कुछ भी टाइप करने के बाद. Your fingers will always remain on the 4 5 6 if you are using a numeric keypad for data entry. Ma'am, there is a query. What are the home keys in Hindi keyboard? Ma'am, the Hindi keyboard I won't be able to tell you correctly Okay, all right. right now because I'm more working on this. Okay, so probably tomorrow when ma'am will have a session, ma'am will definitely tell Yeah, you. she is an expert in Hindi stenography and typing. Okay. Who? Amarjit ma'am. Okay, so probably tomorrow we can place this question to Amarjit ma'am. Yes. Any other questions? All right, so no more questions. आप एक बार you can start. Yeah. See, I have certain videos also lined up which shows the correct ergonomics. But before that, in case you have, some mild overuse symptoms when you are doing typing for a prolonged period of time, so you want to comfort your eyes, you can close your eyes tightly, then open them widely and repeat several times. It's going to comfort. There are certain, I said कि when your symptoms are of overuse are, you can they're coming to you, कुछ आपके अंदर symptoms आते हैं overuse के, तो that's not a disease, that's a point. It will convert into a disease only when you will be ignorant about it, when it will be, progressively, it goes on progressing and you have been quite ignorant about it. So we don't have to come to that point that it progresses so much. So even if there are mild symptoms, you can start with the computer stretches, you can have certain, exercises for the eyes, you can have certain exercises for the hands. या हमने अभी 2 घंटे टाइप कर लिया and we need to finish, there is some very strict deadlines, you need to comfort your hand. You can, comfort your hand by holding a tight fist for 5 to 10 seconds and then open, repeat. You can turn your neck sideways, and also, you can tilt your head, you can shrug your shoulders in a circular motion. I think must be knowing all these stretches because time and again we come across these things, that how to comfort about these parts of our body. Ma'am, if time permits, can I go for some videos? Yes, sure, ma'am. It will definitely add to the presentation. Yeah, actually these videos are these are showing actually the correct typing postures and how to, work correctly on the keyboards. Sure, ma'am. Please. Letters I tend to type so fast Just a that minute, there are ma'am. spelling errors or some of my sentences just sound confusing. I'm Teresa Dickman, Director of the Wellness Canada. Healthy living is important, well-balanced. First, our main focus is healthy movement for playing the piano, but you might be surprised by how slow it is to typing. And some of our students have told us that typing is uncomfortable for them, so I developed these strategies to help Ma'am, them. is there a problem of sound?
People I see can most hear kids you. I reaching can hear between you. their fingers and on the top of their hands while they're typing. And here's one reason why. They're holding their fingers up because they're worried about typing extra letters. Fortunately, we never have to hold up our fingers like that. You've probably noticed that your computer keys move back up to level after you type a character. This key lifting mechanism means that computer keys have enough resistance that we don't have to worry about typing extra keys. So try this. Try moving your hands across your keyboard, just patting lightly here and there. You'll see that you won't type a lot of extra letters when your hands and fingers are light and loose and in their natural shape. Patting the keyboard here and there will help your hands develop trust in the resistance of the keys, so you won't need to tense your fingers by lifting them up to avoid typing extra keys. It's important to know where the bottom of our computer keys are and to rest comfortably there without pushing, even for the short time we touch each key. If you don't release all the way down to the bottom of each key, your forearm will be tense from holding up. If you push past the bottom, you'll have other problems. If you hear a thud every time you type a key, you're hitting hard because you're aiming past the key bottom. That's like hitting any other hard, unyielding surface every time you type a key. The keyboard will be fine, but you'll feel the strain in every joint all the way up to your neck. You can teach yourself to touch the key bottom well by releasing slowly to the bottom of the key with your finger, hand, and forearm as I Ma'am, move. is it audible, ma'am? When your finger gets to the key bottom, It stop is all more the like an typing with echo, your fingers, hand, and forearm. slow and Okay. That means that nothing settles after you touch the key bottom. Okay. Your hand doesn't settle, I your mean, wrist if doesn't it's not settle, your forearm doesn't settle. giving so much of the Touch the benefit, bottom of then the I key, can go all for the another motion video. stops. yes, you can do that. Basically, it's more And when I visible. say release, sometimes Okay, people's okay. wrists dip like Just give me this, 1 minute. often in the name of relaxing. There are no isn't constructive. Using the arm to keep the wrist up. All right, in the meantime, when ma'am joins again, ma'am is going to show us some videos on ergonomics. So I would request till that time, if you have any questions regarding today's session, you can always put it up on the chat box. So chat box, I will pick up your questions and put it up to the ma'am. But you will have to type your queries on the chat box. Yeah, it got just disconnected. Yes. One thing I wanted to share with all the participants, see about these wrist pads. I hope everybody can see this. See, Yes, if you it's have visible. some problems with the wrists while typing, so these wrist pads are very common nowadays. You can have, you can one can get this from the market very easily, wrist pads. And
even as a immediate solution, you can have a small towel and you can roll it, and one can also put below your wrists to give a rest while typing. One has to do typing for a long period of time, and there is some problem with the wrists. One can use the wrist pads, or uh, one can use the fold, टॉवल को रोल करके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं at the time of typing to avoid any problem, to maintain your efficiency. Okay, let me see another video. Just a moment. Shopping या dining, always pay with Uni. क्यों? Hi, I'm going to be talking about computer keyboards. Now, most people and how to use them right, how to use a wrist rest right, and most people use them wrong, and how to make a wrist rest in 3 seconds or less. Hi, my name is Helma Volk, and I was a massage therapist for over 23 years, and I'm also the creator of the program Carpal Tunnel Master. And if you would like a free 5-part video program, just go to that little circly thing up there and click on it, and that'll take you to it. But first, let's talk about keyboards. So a lot of times when I talk about ergonomics, people say, oh, I tried an ergonomic keyboard, I didn't like it, and their mind shuts down and not listen to anything else I want to say. I'm not talking about ergonomic keyboards, so don't even think there, okay? I'm talking ergonomics, meaning how your body fits the equipment that you've got. So, what a lot of people do that I've seen, they're resting their wrist on the table and typing like that. No, you should have your hands float over the keyboard, and you want the keyboard as close to you as possible. So when your keyboard's close to you, you want your arms, your upper arms straight down. That way you're not putting any strain on your shoulders. You're putting the minimal amount of effort on your forearms. And, people are typing like this. That's hard on your shoulders eventually if you do it long enough. Doing it like this, not a good idea. What you want is the back of your hand and the back of your forearm in a straight line as much as possible, as much of the time as possible. When you've got your hands like this, your hands have to go around corners. The tendons that's inside your carpal tunnel have to go around corners, and I discussed that in other videos as to why that's a bad thing, but over time, going around corners can damage you in the long run, potentially. So you want your hands floating above the keyboard. Also, when your hand's down like this, when you press on the space bar, your thumb muscles in here are working. You don't need to do that. Just simply press like this. Let your bigger muscles do the work. That can put strain on these muscles. They get tired and puffy.
And people think, well, they're swollen up. You've got actually muscles that are overused eventually. And also, there's a de Quervain syndrome that can be acquired from doing too much with your thumb. So you want to be floating over the keyboard with your fingers so they're not going like this and that or like this and that. And another thing I see is people have these keyboards raised up. Most of them have snaps on the bottom. So it makes it even worse. More around the corner, and even worse, people are standing up and typing like this. Look how bad that is on your hands. That can produce a lot of problems. Eventually, that can lead to carpal tunnel syndrome. Now, what about wrist rest? Well, most people use them wrong because a wrist rest, contrary to what some manufacturers say, is not for resting your wrist on while you're typing. According to authorities, and if you look at ergonomic sites, ergonomics is simply matching your body to your equipment. You want your hands not resting on a wrist rest. Well, why do they call it a wrist rest? Wrist rests are for resting your hands on when they're not in use. You don't have a wrist rest? Well, neither do I, so I'm going to make one. So here, abracadabra, I have an ordinary towel. You can use a dish towel or a hand towel, whichever is the right thickness for you, and voila! I have a wrist rest. Now, if it starts to come apart, if you think it's falling apart on you, you can put a rubber band on each end, maybe even a rubber band in the middle. Voila, a wrist rest. A wrist rest is not to be resting your wrist on, because look, you're still going around the corners. You're still doing that thumb motion that can hurt you. So it's to rest your hands on when you're not typing. That's the only purpose. And the additional purpose of my wrist rest, which you will not find in the manufactured ones, is if you spill coffee or water, voila, you don't have to look for a towel. I am Hilma Volk. Yes, ma'am. You are not audible. Mic, please switch on your mic. Yeah, ma'am. Any questions or anything? Okay, all right. Let me just check the chat box. All right, so assessment link will be mailed on to your registered email IDs. So, and thereafter you can get your, once your assessments are checked, only then we will be able to send you your certificates. Certificates will come through your, it will be sent to you. You don't need to go to the training portal to download it. All right, so we have, so people want to have the presentations. All I can say is that the presentation is going to be available on the website, on the YouTube channel as a video. You can always pick up and choose whatever you like to teach to your students. And as far as my content material is there, it is available on the CBSE website. You can take it from there. And I think that's it. I don't see any other questions. Still, I'm giving at least 5 minutes for the participants to please put up your questions if you have any, so that I can put it up to ma'am. Yeah, in the meantime, thank you, Swati ma'am. Thanks a lot, CBSE, for organizing this. Many of us really want to look for certain things, for ergonomics things, and we don't get time in the busy schedule. So with these types of workshops, at least this is all, we can update ourselves in our field. So thank you, Swati ma'am, and the CBSE for organizing such a workshops for our
fraternity, and those were all scattered, and this is an online mode, and really very beneficial. At least from wherever we are, we can learn. Thank you so much, Sunita ma'am, for your kind words. And I cannot see any more questions on the chat box. That means the session has gone really very well. It has been well accepted and understood by the people, all the participants. So, with this, also, I thank you for your time, and we'll meet again tomorrow since for the second and the concluding day of our training. So, thank you so much, Sunita ma'am. And if there are any questions that come after you're leaving, Yeah, I'll we put can it also, up to you tomorrow. yeah, we can always learn. We can Thank always you. discuss them tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so much. everyone. Thank So, you. thank you, and thank you all the participants. Make sure you fill up your attendance and then leave, and we will be sending you your assessment forms by 2:30. You need to fill it up, complete, and send it by within 2 hours. So please make sure you do so. And any other queries, if I cannot see any, but all of them are thanking you for your session, ma'am, which is Thank you, also ma'am. Thank you, very everyone. good thing. So with this, I think we can switch off the today's training, and we'll meet Yes, again okay. tomorrow for shorthand Hindi at 10 a.m. and for office procedures after 2 hours. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am.